भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण भगवान की जय। यह जो आध्यात्मिक परिषद का ये अंतिम दिन और अंतिम सत्र है, मैं पूज्य स्वामी देव भक्तानंद जी और उनके साथी गण को जय गणेश प्रार्थना से ये 6th कॉन्फ्रेंस सेशन का प्रारंभ करने के लिए विज्ञप्ति करता हूँ। पूज्य स्वामी देव भक्तानंद जी। जय गणेश पाहि मां। श्री गणेश रक्ष मां। जय गणेश पाहि मां। श्री गणेश रक्ष मां। शरवण भव पाहि मां। कार्तिकेय रक्ष मां। शरवण भव पाहि मां। कार्तिकेय रक्ष मां। जय सरस्वती पाहि मां। श्री सरस्वती रक्ष मां। जय सरस्वती पाहि मां। श्री सरस्वती रक्ष मां। जय गुरु शिव गुरु हरि गुरु राम। जगद्गुरु परम गुरु सद्गुरु श्याम। जय गुरु शिव गुरु हरि गुरु राम। जगद्गुरु परम गुरु सद्गुरु श्याम। ओम आदि गुरु अद्वैत गुरु आनंद गुरु। ओम आदि गुरु अद्वैत गुरु आनंद गुरु। चिन गुरु चिन्धन गुरु चिन्मय गुरु। चित गुरु चिन्धन गुरु चिन्मय गुरु। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। ओम नमो नारायणाय ओम नमो
नमो नारायणाय ॐ 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 नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते रामचन्द्राय ॐ नमो भगवते रामचन्द्राय आञ्जनेयाञ्जनेयाञ्जनेय पाहि मां हनुमन्त 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 रक्ष माम् आञ्जनेयाञ्जनेयाञ्जनेय पाहि मां हनुमन्त 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 रक्ष मां दत्तात्रेय 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 पाहि मां दत्तगुरु 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 रक्ष माम् दत्तात्रेय 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 पाहि मां दत्तगुरु 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 रक्ष मां शंकराचार्य 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 पाहि मां भगवत्पाद 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 रक्ष माम् शंकराचार्य 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 पाहि मां भगवत्पाद 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 रक्ष मां सद्गुरुदेव 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 पाहि मां सद्गुरुदेव 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 पाहि मां शिवानंद 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 रक्ष मां शिवानंद 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 रक्ष मां चिदानंद 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 पाहि मां कृष्णानंद 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 रक्ष मां चिदानंद 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 पाहि मां कृष्णानंद 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 रक्ष मां गंगाराणि 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 पाहि मां भागीरथी 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 रक्ष मां गंगाराणि 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 पाहि मां भागीरथी 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 रक्ष मां ओम शक्ति पाहि मां ब्रह्म शक्ति विष्णु शक्ति शिव शक्ति रक्ष मां ओम शक्ति पाहि मां ब्रह्म शक्ति विष्णु शक्ति शिव शक्ति रक्ष मां आदि शक्ति महाशक्ति पराशक्ति पाहि मां ओम आदि शक्ति महाशक्ति पराशक्ति पाहि मां इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति रक्ष मां इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति रक्ष मां राजराजेश्वरी 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 पाहि मां त्रिपुरा सुंदरी त्रिपुरा त्रिपुरा सुंदरी रक्ष मां राजराजेश्वरी 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 पाहि मां त्रिपुरा सुंदरी त्रिपुरा सुंदरी त्रिपुरा सुंदरी रक्ष मां ओम तत्सदोम 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 शांति ओम शांति ओम शांति ओम तत्सत् ओम तत्सत् ओम तत्सत् ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय
नमो नारायणाय ॐ 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 नमो नारायणाय श्री राम जय जय राम 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 हरि ओम। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन स्वामी शिवानंद जी महाराज के अग्रगण्य शिष्य परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी कृष्णानंद जी महाराज की
ये बर्थ सेंटेनरी जन्म शताब्दी का वर्ष है। ये शताब्दी के उपलक्ष्य में 3 दिन का आध्यात्मिक परिषद का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज इनका अंतिम दिन है और ये अंतिम सेशन है। हमारे सभी के सौभाग्य है BAPS, उनका पूरा अर्थ ये है बोचासणवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था। ये BAPS संस्था जो है वो परम पूज्य प्रातः स्मरणीय प्रमुख स्वामी जी महाराज ने पूरे विश्व में उनका संवर्धन किया, विकास किया और उन्होंने ही न्यू दिल्ली में स्वामीनारायण अक्षरधाम उनकी स्थापना भी की। सारे भारतवर्ष और विदेश में 250 से ज़्यादा भगवान स्वामीनारायण के मंदिर भी उन्होंने स्थापित किए और बहुत बड़ी एक संस्था है जिनके साथ हमारा गुरुदेव स्वामी चिदानंद जी महाराज का बहुत पुराना नाता भी रहा है। और ये संस्था हमारे साथ बहुत सालों से जुड़ी हुई है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो इस संस्था के अक्षरधाम न्यू दिल्ली के हेड ऑफ द स्वामीनारायण अक्षरधाम वो आज पूज्य साधु मुनिवत्सल दास जी महाराज हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके पधारे हुए हैं। मैं उनके चरणों में वंदन करते हुए सभी की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पूज्य साधु मुनिवत्सल दास जी महाराज पूर्वाश्रम में मैकेनिकल इंजीनियर थे। अहमदाबाद गुजरात में उनकी पढ़ाई हुई। 1987 में परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने उनको दीक्षा दी। सनातन धर्म के शास्त्रों एवं अन्य धर्मों और संप्रदायों का गहन अध्ययन भी स्वामी जी महाराज ने किया है। सन 2016 में दिल्ली अक्षरधाम मंदिर के मुख्य कार्यवाहक संत नियुक्त किए गए हैं और अच्छे वक्ता भी है, अच्छे चिंतक भी हैं और देश विदेशों में हमारा जो सनातन धर्म है वो सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए वो परिभ्रमण भी करते रहते हैं, देश विदेश जाते रहते हैं। तो आज यह कॉन्फ्रेंस का अंतिम दिन में पूज्य स्वामी मुनिवत्सल जी महाराज हमारे यहाँ पधारे हैं, तो मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ और पूज्य स्वामी जी से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी अमृतवाणी से हमें लाभान्वित करें। पूज्य साधु मुनिवत्सल जी महाराज। यत्संकल्पात् तपति तपनो वाति वातः समिन्धे वहनीर्धते धरणिरुदधीर् लङ्घते नैव वेलाम् सोऽयं श्रीमान् निखिलजगताम् अन्तरात्मावतीर्णो धर्मं रक्षन् दिशतु कुशलं स्वामिनारायणो नः। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्।
मुच्यते भवबंधनात्। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण देव की। सियावर रामचंद्र भगवान की। उमापति महादेव की। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय भारतवर्ष के प्रकाशमान दिव्य तेजस्वीमान पूज्यपाद स्वामी शिवानंद जी महाराज के श्री चरणों में सर्वप्रथम आज के इस अवसर पर हम प्रणिपात करते हैं। हमारे सभी के आदरणीय परम श्रद्धेय परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज के अत्यंत प्रिय ऐसे पूज्यपाद स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज के चरणों में आज के अवसर पर हार्दिक दंडवत प्रणाम निवेदित करते हैं। संतता की आभा और संतत्व की वो प्रभा से जिन्होंने महान कार्य किया है, ऐसे हमारे पूज्यपाद स्वामी विमलानंद जी महाराज के चरणों में भी आज के अवसर पर साष्टांग दंडवत प्रणिपात निवेदित करते हैं। और आज के इस अवसर पर हमारे समक्ष विराजमान परम आदरणीय परम वंदनीय परम पूज्य स्वामी योग स्वरूपानंद स्वामी जी के जुगल चरणों में, परम पूज्य स्वामी निर्लिप्तानंद स्वामी जी के जुगल चरणों में, परम पूज्य स्वामी पद्मनाभानंद स्वामी जी के जुगल चरणों में, अन्य महान विभूतियों, संत विभूतियों, साधकों, उपस्थित भक्तों, सभी के चरणों में आज कोटि कोटि वंदन निवेदित करते हैं। परंतु आज का अवसर है उनको वंदन करने का, उनका स्मरण करने का, जिनका जन्म शताब्दी वर्ष हम मना रहे हैं। परम पूज्य परम श्रद्धेय परम आदरणीय पूज्य स्वामी कृष्णानंद सरस्वती जी महाराज, जिनके जन्म शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में पिछले 2 दिन से हम विविध व्याख्यानों के माध्यम से, विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से, भगवत गीता के पाठ आदि विविध अनुष्ठानों के माध्यम से भगवान की पूजा प्रार्थना करके उनका जन्म शताब्दी महोत्सव मना रहे हैं। उनके चरणों में हम आज के अवसर पर लाख लाख वंदन निवेदित करते हैं। जिस मंच पर आपने खूब आदरपूर्वक ठाकुर जी का पूजन किया है, प्रमुख स्वामी जी महाराज का पूजन किया है, हमारे वर्तमान गुरुदेव परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज का पूजन किया है, उनका वंदन किया, उनका सम्मान किया, ये मंच और जिस आसन पर आज आप सभी ने परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज का एक छोटा सेवक जानकर, परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज का छोटा सेवक जानकर, जो मेरे गुरु को योग्य आसन है, उस आसन पर आज मुझे बिठा दिया है।
परंतु वो सम्मान, वो आदर आपका प्रमुख स्वामी जी महाराज के प्रति है, आपका अक्षरधाम के प्रति है, आपका BAPS संस्थान के प्रति है। और महंत स्वामी जी महाराज की आज्ञा से, उनके आशीर्वाद लेकर आज हम 2 संतों यहाँ पर आए हैं। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ। इसलिए भाग्यशाली समझता हूँ कि हमारे गुरुदेव परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज के सानिध्य में मुझे यहाँ स्वामी शिवानंद महाराज जी के जन्म शताब्दी अवसर पर उपस्थित रहने का सौभाग्य मिला था। तब मैंने संत दीक्षा नहीं ली थी, परंतु गुरु जी के सानिध्य में ही यहाँ पर बहुत अद्भुत जो उत्सव हुआ था, उसमें मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था दर्शन का। मेरा ये भी सौभाग्य रहा कि परम पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज के जन्म शताब्दी महोत्सव के अवसर पर इसी मंच पर मुझे ये अवसर का लाभ लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और आज दिव्य जीवन संघ की नींव में, उनके विकास में, उसके विस्तार में, उसके प्रचार में, और दिव्य जीवन संघ ने जो सिद्धांत और मूल्यों का प्रसारण किया है, उसको अपने जीवन में आत्मसात करके उसको विश्वव्यापी बनाने में जिनका भगीरथ पुरुषार्थ है, ऐसे महान संत परम पूज्य स्वामी कृष्णानंद सरस्वती जी महाराज के जन्म शताब्दी महोत्सव पर भी आज यहाँ पर उपस्थित रहने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। समग्र BAPS संस्था की ओर से, अक्षरधाम परिवार की ओर से, परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज और परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज की ओर से इस उत्सव के समिति के सभी आयोजक और संतों के चरणों में लाख लाख बधाई, अभिनंदन, वंदन। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर काव्य पंक्तियों लिखी है रामचरितमानस में। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस बिसद गुणमय फल जासु जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जेहि जग जस पावा। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस बिसद गुणमय फल जासु जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जेहि जग जस पावा। ऐसे साधु चरित संत जिनके चरित्र की तुलना गोस्वामी जी ने कपास के फल के साथ की है। कपास का फल नीरस होता है, उसमें कोई रस होता नहीं है। बिसद जो भीतर से उज्जवल है, बाहर हरा दिखता है, बाहर सूखा भी दिखे, पर अंदर से उज्जवल है, श्वेत है, धवल प्रकाश है। और गुणमय मतलब तंतु वाला है। साधु का चरित्र का ऐसा ही वर्णन गोस्वामी जी करते हैं, परंतु एक अलग
और विशिष्ट अर्थ में कपास के फल के साथ उसकी तुलना की गई है। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस। रस का अर्थ होता है आसक्ति। संत का चरित्र ऐसा है कि जिनको संसार की कहीं पर कोई आसक्ति नहीं है, स्पृहा नहीं है, कहीं वो लिप्त होते नहीं है, कहीं वो परमात्मा के अतिरिक्त जुड़े हुए नहीं है, निरस है, निष्काम है, उनको संसार की कोई कामना नहीं है, वो यश प्रार्थी नहीं होते हैं, उनके जीवन में अपनी कोई विशिष्ट महत्वाकांक्षाएं नहीं होती है, इसलिए उनको नीरस कहे हैं। विशद संत का बाह्य रूप अर्थात उनका पार्थिव शरीर कैसा भी हो, उनका संतत्व जो है वो संतत्व सबको आकर्षित करता है, वो उज्ज्वल है और नीरस विशद गुणमय सद्गुणों से भरा हुआ उनका दिव्य चरित्र, जिनका चरित्र हमारे चरित्र को बनाता है, हमारे चरित्र का निर्माण करता है। इसीलिए ऐसे महोत्सव के माध्यम से, ऐसे उत्सव के माध्यम से हम ऐसे संतों के चरित्र की महिमा गाते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और उसको आत्मसात करने का प्रयास करते हैं, तो हम स्वयं सद्गुणों से सिंचित हो जाते हैं। जो महानता को अपनाता है वो स्वयं महान बन जाता है। ये संत कभी कोई इच्छा, महत्वाकांक्षा, अपेक्षाओं न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। ऐसी एक भूमिका पर वो विराजमान होते हैं। तो ऐसे संतों के श्री चरणों में, उनके जुगल चरणों में प्रणिपात करने का ये अवसर है और ये सौभाग्य से हमें प्राप्त होता है। और ऐसा आयोजन इसलिए बार बार होता है और होना चाहिए, उसमें संतत्व की एक लहर है, वो समाज में प्रसरित होती है और जो संसार को निर्मल करता है। परम पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, उनको ब्रह्म स्वरूप योगी जी महाराज के दर्शन गोंडल में हुए थे। ये दो महापुरुषों का मिलन गोंडल में हुआ था और उस समय हमारे आदरणीय पूज्य योग स्वरूपानंद स्वामी जी भी साथ में थे। सन 1969 में 1969 में ब्रह्म स्वरूप योगी जी महाराज गोंडल में विराजमान थे। योगी जी महाराज भी अलमस्त संत और हमेशा बोलते थे कि भगवान सबका भला करे, भगवान सबका भला करे, भगवान सबका भला करे। योगी जी महाराज रात को मध्य रात्रि के बाद भी लघुशंका के लिए उठते थे, तब भी उनके मुख से यही उच्चारण होता था, भगवान सबका भला करे। और दूसरी बात योगी जी महाराज बोलते थे, भगवान का भजन कर लो, भगवान भजी लेवा, भगवान भजी लेवा। ऐसे परम पवित्र संत जिनके संतत्व से आकर्षित होकर नवयुवानों ने दीक्षा ली, पढ़े लिखे नवयुवानों, और उसमें हमारे वर्तमान गुरुदेव परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज युवा अवस्था में ही योगी जी महाराज से आकर्षित हो गए और अपना बीएससी एग्रीकल्चर पूर्ण करने के बाद स्वामी जी के चरणों में संत बने। साधु केशव जीवन दास और महंत स्वामी जी महाराज के नाम से आज विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो ऐसे योगी जी महाराज के साथ जब उनका ऐसा सुंदर मिलन हुआ था, परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज 350 संतों को लेकर यहाँ पधारे थे।
स्वामी शिवानंद जी महाराज के जन्म शताब्दी महोत्सव पर, और उस समय दिव्य जीवन संघ के महासचिव के रूप में वर्षों से अपनी सेवा दे रहे थे स्वामी कृष्णानंद जी महाराज। तब प्रमुख स्वामी जी महाराज और उनका भी मिलन यहीं हुआ था। तो वास्तव में ये शताब्दी का वर्ष चल रहा है और हमें हर्ष इस बात का है कि ये प्रमुख स्वामी महाराज की जन्म शताब्दी वर्ष भी चल रहा है। पिछले वर्ष प्रमुख स्वामी महाराज का जन्म शताब्दी वर्ष पूरा मनाया गया और पिछले दिसंबर से अगले दिसंबर 2022 का ये दिसंबर है, तब तक का पूरा वर्ष प्रमुख स्वामी महाराज जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में पूरी BAPS संस्थान विश्व भर में मना रही है। तब ये महापुरुषों के जीवन में जो संतता है, उनका साधु चरित्र की जो सुवास है और वो साधुता का जो अद्भुत दर्शन है, तो उसमें जो साम्यता का दर्शन होता है संत चरित्र का, वो हम सभी को खूब आह्लादित करता है। जब स्वामी कृष्णानंद जी महाराज दक्षिण भारत से स्वामी शिवानंद जी महाराज के पास आए, दीक्षित हुए, और उस समय गुरु का एक आदेश मिला उनको कि आप कुछ लिखो। तब उन्होंने विचार किया, मैं क्या लिखूं, कैसे लिखूं। परंतु लिखने की वो प्रेरणा, उस समय तो वो संभवतः मन में विचार कर रहे होंगे कि स्वामी शिवानंद सरस्वती जी महाराज इतने उच्च आध्यात्मिक अनुभवी महापुरुष, और अध्यात्म के विषय में, अनुभव के विषय में, परमात्मा के विषय में कुछ लिखने के लिए वो कह रहे हैं। गुरु का आदेश था, झिझक थी मन में, परंतु उनका सर्वप्रथम पुस्तक उन्होंने थोड़े ही दिनों में लिखकर गुरु जी को अर्पण किया, और वो पुस्तक का नाम है द रियलाइजेशन ऑफ द एब्सोल्यूट। अपने आध्यात्मिक अनुभवों को लेकर ये पुस्तक लिखा गया, जो आज लाखों साधकों को प्रेरित करता है। गुरु की आज्ञा, गुरु की इच्छा, उसके अनुसार हम जो भी कुछ करते हैं तो सीधा गुरु का ही प्रकाश उसमें होता है। उसका एक अद्भुत दर्शन इस पुस्तक में स्वयं होता है। और बाद में तो योग विषय को लेकर, ध्यान को लेकर, खास करके उनका वेदांत पर जो अपना चिंतन था, ब्रह्म विद्या को लेकर, उपनिषदों को लेकर, जो उन्होंने भारतीय तत्वदर्शन को लेकर जो अपना अद्भुत अनुभव और चिंतन अपनी एक विशिष्ट शैली में लिखा है, जो साधना करने वाले सभी को आज खूब प्रेरित करता है। और गुरु का एक आदेश ये भी मिला, आप यहीं रहो, यहाँ रहना है आपको। और बाद में उन्होंने ये आदेश का संपूर्णतः पालन किया। इसी स्थान पर रहकर उन्होंने वर्षों तक, सन 2001 तक उन्होंने अपनी सेवा ये प्रदान करते रहे। वे
छोटी वयी में अभी तो आए थे, संत बने, उनके भीतर का तत्व गुरु ने देख लिया था और इतनी विश्वव्यापी संस्था के महासचिव के रूप में जब उनको नियुक्त कर दिए, परंतु पद नहीं, सेवा को ही उन्होंने प्रधानता दी और वो सेवा करते रहे और एक ही लक्ष्य के साथ सेवा करते रहे कि कैसे गुरु प्रसन्न हो और कैसे इस प्रकार से अध्यात्म का संसार में अच्छी तरह से प्रचार हो सके। साहित्य की बड़ी सेवा उनके द्वारा हुई। जब ये प्रसंगों को हम सुनते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि महापुरुषों के जीवन में लगभग सब कुछ समान बनता होगा। छोटे 28 वर्ष की आयु के प्रमुख स्वामी जी महाराज, नाम तो उनका था साधु नारायण स्वरूप दास जी, 28 वर्ष की आयु के थे और उस समय उनके गुरुदेव ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज, शास्त्री यज्ञपुरुष दास जी, जो BAPS के संस्थापक थे, उन्होंने प्रमुख स्वामी जी महाराज को 28 वर्ष की आयु में संस्था के प्रमुख बना दिए। और भी बड़े संतों थे, प्रमुख स्वामी जी महाराज आनाकानी करते रहे, हाथ जोड़कर गुरुदेव को कहने लगे, मेरे से बड़े हैं, अनुभव में भी बड़े हैं, पूजनीय है, वंदनीय है, मैं छोटा हूँ। शास्त्री जी महाराज ने उस समय उनको संस्था के प्रमुख पद पर नियुक्त किए। जो उपवस्त्र स्वयं ओढ़ा था वो उनको ओढ़ा दिया और अहमदाबाद में एक छोटा सा स्थान, एक छोटा सा घर, एक छोटे से कमरे में इतने बड़े प्रमुख पद का स्वीकार करने के लिए गुरुजी ने उनको समझो आदेश दिया। लगभग 100 लोग इकट्ठे हुए थे और बाद में सभी लोगों ने भोजन भी किया। वो समारोह समाप्त हुआ, सभी संत भक्त ने विदा ली, जूठे बर्तन पड़े थे। ये नूतन प्रमुख, नवोदित प्रमुख वो जूठे बर्तन मांजने के लिए बैठ गए। वो स्थान भी आज बना है। वर्षों के बाद प्रमुख स्वामी जी महाराज को संतों ने पूछा कि स्वामी जी, जिस दिन आपको प्रमुख बनाए उसी दिन आप बर्तन मांजने बैठ गए, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि मुझे प्रमुख बनाए? प्रमुख स्वामी जी महाराज ने कहा कि प्रमुख बने इसका अर्थ ये नहीं है कि सेवक मिट गए। प्रमुख तो एक सेवा का पद है, मुख्य बात तो सेवा है। महापुरुषों के जीवन में सेवा भाव ही दिखता है और इसलिए ये परिसर उसका साक्षी है। इस परिसर का एक एक कोना साक्षी है कि जिन्होंने स्वामी कृष्णानंद सरस्वती जी महाराज की सेवा को देखा है, स्वयं अनुभव किया है। महासचिव के रूप में वो अपनी सेवा तो दे ही रहे थे। देखिए, कोई भी जिम्मेदारी और कर्तव्य वो हमेशा संघर्षमय होता है, क्योंकि जहां जिम्मेदारी होती है, कर्तव्य होता है, दायित्व ऊंचा होता है, वहां स्वाभाविक रूप से चिंता भी होती है। परंतु ये महापुरुषों के जीवन में कुछ विलक्षणता यहीं पर घटती है। इसी मोड़ पर वो अलग दिखते हैं, अलग होते हैं। एक तरफ साहित्य का सृजन करना, दिव्य जीवन संघ की प्रकाशन पत्रिकाओं, जो मासिक पत्रिकाओं छपती है, उसका
संपादन कार्य करना, नूतन लेखों को देखना लिखना, 40 से भी अधिक पुस्तकों जिन्होंने लिखे हैं वो भी देखना, अन्य सेवाओं को भी देखना, समाज में भी लोग आते थे मिलते थे। ये सभी के बीच में वो अपनी आध्यात्मिक साधना को अच्छी तरह से कर सकते थे, उसके बीच में वो शांत रह सकते थे, उसके बीच में वो प्रसन्न रह सकते थे, उसके बीच में वो हल्के फूल से रह सकते थे, जैसे कोई प्रवृत्ति का भार ही नहीं है। स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के जीवन में जो भी अनुभवी संतों उनके साथ रहे हैं, देखे हैं, उनका सीधा बयान है कि सब कुछ करने के बाद भी उनको इतने प्रसन्न देखते थे, और एक वात्सल्यमयी माता, उनकी जो ममता होती थी, ऐसे ममता के भाव से उन्होंने सभी संत साधकों को बांध के रखे थे। ऐसा प्रेमल मृदुल स्वभाव और प्रवृत्ति का घमासान, ये दोनों का तालमेल एक साथ बिठाना, ये आध्यात्मिकता पूर्ण रूप से जीवन में भरी हो तब ही संभव हो सकता है, नहीं तो संभव हो सकता नहीं है। बहुत अद्भुत दर्शन प्रमुख स्वामी जी महाराज के भी हमें यही भाव के हुए हैं। दिल्ली के अक्षरधाम का निर्माण हो रहा था। 100 एकड़ की भूमि पर इतना बड़ा व्यापक अक्षरधाम जो मात्र 5 वर्ष की समयावधि में संपूर्ण हुआ। प्रमुख स्वामी जी महाराज बार बार आते थे, वर्ष में लगभग 2 बार दिल्ली निर्माण कार्य के दौरान आते थे। संतों के साथ बैठक होती थी, नक्शे को देखते थे, मौके पर जाते थे, अवलोकन करते थे, एक एक वस्तु को समझते थे, पूछते थे, अवलोकन करते थे, मार्गदर्शन देते थे। और एक समय तो ऐसा था, सन 2003 की बात है, 2 ऊंची गैंट्री क्रेन लगी, डेरिक क्रेन लगी हुई थी, 2 गैंट्री क्रेन थी, एक टावर क्रेन थी, कुछ मोबाइल क्रेनें घूम रही थी। 2200 जितने स्वयं सेवकों और शिल्पकारों एक साथ साइट पर थे। कहीं आईमैक्स फिल्म का शूटिंग चल रहा था, कहीं ये नौका विहार और ऑडियो एनिमेट्रॉनिक शोज, उसका तकनीकी जो भी ताने बाने बुने जा रहे थे, नक्शे खुल रहे थे, चर्चा विमर्श हो रही थी। प्रवृत्ति, घोरतम प्रवृत्ति का घमासान, गढ़े तरासे हुए पत्थरों का ढेर लगा हुआ था। और उस समय प्रमुख स्वामी जी महाराज अवलोकन करते थे, इतने प्रसन्न मुद्रा में। प्रसन्नता प्रमुख स्वामी जी महाराज का स्थायी भाव था। और वो पत्थरों के बीच में से निकलते थे, शिल्पकारों के सिर पर हाथ रखते थे, अवलोकन भी करते थे, मार्गदर्शन भी देते थे। संतों ने अवलोकन किया और बाद में जब प्रमुख स्वामी जी महाराज को मिले, संतों ने कहा कि स्वामी जी, यदि आज जितना ये व्याप है वो सीधा ही यदि किसी को भेंट कर दिया जाए कि आज से ये सारा आपका और आप इसको संभालो, तो भी हार्ट फेल हो जाएगा कि इसको कैसे संभाल पाएंगे। और आप तो हल्के फूल से है, एक चिंता की लकीर नहीं है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, कोई व्याकुलता नहीं, कोई आकुलता नहीं, कोई अधीरता नहीं, कोई बावरे बेबाकले उतावले नहीं। तब प्रमुख स्वामी जी महाराज ने एक सुंदर बात कही। स्वामी जी ने कहा, बाहर ढेर सारे पत्थर पड़े हैं, छाती पर एक कंकड़ का भी भार नहीं है। बाहर ढेर सारे पत्थर पड़े हैं, छाती पर एक कंकड़ का भी भार नहीं है। फिर प्रमुख स्वामी जी महाराज बोले, हम कहाँ करता है, करने वाले तो परमात्मा है, भगवान स्वामी नारायण जी की इच्छा से हो रहा है और गुरुदेव योगी जी महाराज के संकल्प से हो रहा है, उनके आशीर्वाद से हो रहा है।
तो चिंता उसको है। ये जो दर्शन है, प्रवृत्ति थोड़ी हो या ज्यादा, भार कर्तव्य का होता है, जिम्मेदारी का होता है। और उसके बीच में भी इतने अलिप्त रहकर गुरु के चरणों में ही अपने मन को संलग्न करके निरंतर उनकी प्रसन्नता के लिए ही, उनकी आज्ञा के अनुसार ही ये जीवन को व्यतीत करना साधक का सबसे बड़ा, यदि जो कोई आध्यात्मिक मार्ग को प्रशस्त करने वाला सूत्र हो तो यही है, गुरु की आज्ञा के अनुसार ही करना, उसमें तनिक भी मनमुखी नहीं बनना। स्वामी शिवानंद जी महाराज ने उनको कहा था, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं रहिए, दुनिया की सत्ता तुम्हारे चरणों में यहां आएगी और दुनिया की संपदा भी आपके संकल्प करने पर यहां आएगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और ये तपस्वी देदीप्यमान संतों में इतना प्रभाव था, जब वो ध्यान कर लेते थे तो सब कुछ सिद्ध हो जाता था, और जो संकल्प करते थे वो संकल्प साकार बनकर उनके सामने आ जाते थे। ये उनकी विलक्षणता होती थी। और ऐसा अनुभव यहाँ बैठे हुए जो भी कोई उनके योग में आए हैं, उन सभी को अपने जीवन की घटनाओं, प्रसंग जो उनके साथ घटे हैं वो जरूर स्मरण होते रहते होंगे, क्योंकि एक मानव शरीर के अंदर एक ऐसी ऊर्जा कार्य कर रही होती है, एक ऐसी निष्ठा कार्य कर रही है, भगवत स्वरूप का ऐसा निश्चय कार्य कर रहा होता है, वो स्वयं ब्रह्मनिष्ठ होते हैं। और ऐसे संत श्रोत्रिय होते हैं, और इसीलिए ऐसे संत के चरणों में बार बार नमन करने से वही फल हमें प्राप्त होता है जो उनको मिला है। ये अवसर उनकी महिमा समझने का अवसर है, उनसे कुछ जीवन में पाने का अवसर है। और ये महापुरुषों की शताब्दी, शताब्दियों, आने वाली शताब्दियों तक हमें प्रेरित करती रहती है। उन्होंने भारतीय वेदांत को बहुत सटीक रूप से, भारतीय तत्व दर्शन को बहुत अद्भुत रूप से, मुंडक उपनिषद आदि उपनिषदों के श्रेष्ठ भाष्यों को जगत के समक्ष जब प्रस्तुत किए हैं, तब साक्षात भगवान वेद भी नाच उठते हैं। उनके मन में भी ऐसा भाव होता है कि जो मंत्र दृष्टा ऋषियों ने जो मेरा दर्शन पाया था और मैंने जिस रूप में उनको दर्शन दिया था, आज उसी दर्शन को उसी रूप में जगत के समक्ष प्रस्तुत करने वाले और प्रकट करने वाले ये महापुरुष, उनके पुरुषार्थ को देखकर भगवान स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। और ऐसे संत साकार रूप में ब्रह्म की मूर्ति होते हैं, वो ब्रह्म स्वरूप होते हैं, और अंत में वो ब्रह्म में लीन होते हैं। हमारे बीच में पूज्य स्वामी सत्यकामानंद जी विराजमान है। उन्होंने एक प्रसंग अभी सुनाया था कि वो स्वामी जी महाराज के अंतेवासी के रूप में सेवा कर रहे थे, और अंतिम अवस्था में, अंतिम क्षण में इस जगत में उनका अंतिम वचन क्या था, अंतिम वाक्य क्या था, तो अंत में उन्होंने इतना ही कहा था कि अब मैं सर्वशक्तिमान परमात्मा में विलीन होता जा रहा हूं।
सर्वशक्तिमान परमात्मा में, ब्रह्म में मैं विलीन होता जा रहा हूं, बस इतना बोले और शरीर छूट गया। ये जो प्रतीति है, ये जो अनुभूति है, वो तो ब्रह्म में ही लीन रहते थे, उनको लीन होना नहीं था, वो ब्रह्म के स्वरूप ही थे। परंतु साधकों को एक आध्यात्मिक विश्वास जगाने के लिए कि जिस साधना में हम कार्यरत है वो वास्तविक सत्य है, आज चिंतन में आए, बाद में अनुभूति में आए, वो साक्षात्कार के रूप में हमारे बीच में प्रकट हो जाए, ये वास्तविकता है, ये काल्पनिक नहीं है, ये ब्रेन वॉश नहीं है, ये अनुभूति है। इसलिए उन्होंने कुछ क्षणों पहले ही कहा कि अलमाइटी में मैं मर्ज हो रहा हूं, विलीन हो रहा हूं। वो तो विलीन ही थे, लीन ही थे, परंतु उनके पास वो सामर्थ्य है कि जो कोई आए उनके योग में, संयोग में, सत्संग में, उनकी निश्रा में, उनको भी वो ब्रह्म का साक्षात्कार करा सकते हैं, यदि विश्वास हो तो। एक अद्भुत घटना घटी है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब हमारे भारत के महामहिम राष्ट्रपति रह चुके और भारत के प्रधानमंत्री के तत्कालीन वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में उन्होंने वर्षों तक अपनी सेवाएं प्रदान की। पूरा विश्व उनको मिसाइल मैन के रूप में आज जानता है। ऐसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब सन 2001 में पहली बार प्रमुख स्वामी जी महाराज के दर्शन के लिए दिल्ली पधारे। प्रमुख स्वामी जी महाराज का सामाजिक कार्य भुज में उन्होंने देखा था। भुज में जब भूचाल आया और उस समय मानव सेवा का इतना बड़ा आंदोलन उन्होंने देखा और इतने भावपूर्वक ये जो सेवाएं हो रही थी, ये देखकर वो बड़े अभिभूत हुए और इस सेवा के सूत्रधार को मिलने के लिए वो लालायित थे। उनके एक मित्र थे डॉक्टर YS राजन, वो भी बड़े वैज्ञानिक, प्रमुख स्वामी जी महाराज के पास उनको ले आए। 30 जून 2001 दिल्ली में कलाम साहब आए, प्रमुख स्वामी महाराज की निश्रा में बैठे और उस समय उन्होंने स्वामी जी को डेवलप्ड इंडिया विजन 2020 का एक प्रारूप बताया। उन्होंने कहा कि स्वामी जी 2020 तक भारत एक विकासशील देश में से विकसित देश में बदल जाए, उसकी हमने योजना बनाई है और भारत के 500 मनीषियों ने, अलग अलग क्षेत्र के विद्वानों ने साथ में चिंतन करके 5 क्षेत्रों में भारत का असाधारण विकास हो, ऐसी एक योजना बनाई है। और संरक्षण के क्षेत्र को लेकर, कृषि के क्षेत्र को लेकर, शिक्षा के क्षेत्र को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र को लेकर, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र को लेकर कैसे भारत को विकसित देश बनाया जाए, उसका बहुत सुंदर प्रारूप बनाया था। प्रमुख स्वामी जी महाराज के आगे उन्होंने प्रस्तुत किया। स्वामी जी ने बहुत ही ध्यानपूर्वक उसको देखा और 5 क्षेत्रों की चर्चा भी सुनी। प्रमुख स्वामी जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और बाद में प्रमुख स्वामी जी महाराज ने कहा, कलाम साहब इसमें 6ठा क्षेत्र जोड़ दीजिए। जब इतनी बात स्वामी जी ने कही तो कलाम साहब एक पुस्तक में लिखते हैं, पुस्तक का नाम है ट्रांसेंडेंस, जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का अंतिम पुस्तक है। 20 जून 2015 को ये पुस्तक उन्होंने प्रमुख स्वामी जी को अर्पण किया और 27 जुलाई 2015 को कलाम साहब ने शरीर छोड़ा। अपने दिवंगत होने के 37 दिन पहले ही ये पुस्तक उन्होंने लिखा था। अपने जीवन का उनका अंतिम पुस्तक था। ये पुस्तक का प्रथम जो चैप्टर है लीड इंडिया, उसमें इसी प्रसंग को लेकर कलाम साहब ये पुस्तक का प्रारंभ करते हैं कि जब प्रमुख स्वामी जी महाराज ने मुझे कहा कि कलाम इसमें एक 6ठा क्षेत्र जोड़ दीजिए, कलाम साहब कहते हैं कि उस समय प्रमुख स्वामी जी के ठीक सामने में बैठा था। उनके वाक्यों में इतनी स्पष्टता थी, उनके वचन में इतनी दृढ़ता थी और प्रमुख स्वामी जी महाराज के पूरे शरीर में से एक दिव्य तरंगो निकल रहे थे जो मेरे भीतर में प्रवेश कर रहे थे। मैं पूर्ण रूप से अभिभूत था और उस समय मैं सावधान भी था
कि छठा क्षेत्र जोड़ने के लिए स्वामी जी कह रहे वो बात क्या है। और ये बात को सुनने के लिए मैं तत्पर था और प्रमुख स्वामी जी महाराज ने कहा कि कलाम साहब छठा क्षेत्र जोड़ दीजिए। भगवान में श्रद्धा, अध्यात्म में श्रद्धा, धर्म में श्रद्धा। जब तक परमात्मा में श्रद्धा नहीं होगी, भारत के असाधारण विकास की जितनी भी योजनाओं है वो योजना साकार नहीं हो पाएगी। क्योंकि कोई योजना को साकार करने के लिए भारत के नागरिक का समर्थन मिलना और उनका सहयोग मिलना बहुत जरूरी है। और अच्छे और श्रेष्ठ नागरिक धर्म के आचरण से और अध्यात्म में जब उसकी रुचि हो तभी बन पाएंगे। और इसीलिए धर्म का क्षेत्र जोड़ दीजिए। कलाम साहब कहते हैं कि तभी से प्रमुख स्वामी जी महाराज के चरणों में मैं मन से ही समर्पित हुआ। और उन्होंने आगे कहा है कि मैंने प्रमुख स्वामी जी महाराज को मेरे जीवन के सर्वोच्च गुरु के रूप में स्वीकार कर लिए। क्या सिखाया ये गुरु ने? 6 कक्षा तक पढ़े थे प्रमुख स्वामी जी महाराज, 6 कक्षा तक पढ़े थे। और डॉक्टर कलाम साहब 42 बार ऑनररी डॉक्टरेट की डिग्री उनको मिली थी। परंतु प्रमुख स्वामी जी महाराज ने उनको क्या सिखाया और वो क्या सीखे उस गुरु के पास से? कलाम साहब कहते हैं कि प्रमुख स्वामी जी टोट मी हाउ टू रिमूव आई एंड हाउ टू रिमूव माइंड। अहंता और ममता के भावों से कैसे ऊपर उठना, मैं और मेरा, ये माया के बंधन को कैसे तोड़ना, प्रमुख स्वामी जी महाराज ने मुझे ये सिखाया है। संत ये सिखाते हैं। ये महापुरुष हमारे समक्ष विराजमान है। उनकी विनम्रता को देखकर, उनकी संतता को देखकर, उनकी साधुता को देखकर, उनके भीतर में जो अध्यात्म ऊंचा चिंतन है उसको देखकर हम इसलिए नतमस्तक है कि उनके पास बैठकर उनकी निश्रा से अहंता ममता के भाव से कैसे ऊपर उठना वो हमें सीखना होता है। प्रमुख स्वामी जी महाराज ने ये सिखाया। मैं बात कर रहा था कि उनके योग में कोई भी आए उनको वो ब्रह्म की अनुभूति कराते हैं। इसी ट्रांसेंडेंस पुस्तक में अंत में कलाम साहब अपनी अनुभूति लिखते हैं, माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस विथ प्रमुख स्वामी जी। और उसमें कलाम साहब लिखते हैं, नाउ प्रमुख स्वामी जी हैज पुट मी इन ए गॉड सिंक्रोनस ऑर्बिट। प्रमुख स्वामी जी महाराज ने मुझे भगवान के परिक्रमा के परिभ्रमण पथ पर शाश्वत काल के लिए स्थापित कर दिया है, जो अमरत्व का अंतिम पड़ाव है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। उसकी अनुभूति जीते जी हो जाना। स्वामी जी ने कहा मैं ब्रह्म में विलीन हो रहा हूं। स्वामी कृष्णानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा, वो तो ब्रह्म में साक्षात्कार वाले ही थे, परंतु ऐसे संतों में ये सामर्थ्य है को दूसरों को भी ब्रह्म का साक्षात्कार, ईश्वर का साक्षात्कार, परमात्मा की अनुभूति सहज ही करा सकते हैं। यह संत की विलक्षणता है। और ऐसे संत का समागम जब हमें मिल जाए, उनका सानिध्य मिल जाए, उनकी पावन उपस्थिति में बैठने का योग प्राप्त हो जाए, तो गोस्वामी जी कहते हैं उससे मंगलमय और आनंदमय दूसरा कोई अवसर नहीं है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जंगम तीरराजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। मूड मंगलमय संत समाजू, जो जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा,
सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। ऐसे संत का समागम मिल जाए जो जंगम तीर्थ समान है। तीर्थराज प्रयाग, उसका स्मरण किया है गोस्वामी जी ने, जहां द्रव्य का खर्च करके सबई निकाल कर यात्रा का कष्ट उठाकर हमें जाना पड़ता है, वो स्थावर है। परंतु ये संत जंगम तीर्थ है, तीर्थराज है, वो चलकर हमारे सामने आते हैं, हमें जाना पड़ता नहीं है। 17,500 जितने गांव में प्रमुख स्वामी जी महाराज चल कर गए, 2.5 लाख जितने घरों में प्रमुख स्वामी महाराज ने पधरामनी की, विश्व के 50 से अधिक देशों में प्रमुख स्वामी जी महाराज का भ्रमण था। 40 लाख लोगों को तो व्यक्तिगत रूप से मिले। स्वामी शिवानंद सरस्वती जी महाराज, स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज के दर्शन किए हैं हमने। सतत परिभ्रमण करते रहे, सतत। ये जंगम तीर्थ है। मां भगवती पुण्य सलीला भागीरथी यहां से बहती है, सभी की मलिनता को हर कर, सबको पवित्र और निर्मल बनाकर वो आनंदित होती है। उसी प्रकार ये संत भी संसार में परिभ्रमण करते हैं और संसार को निर्मल बनाते हैं, सबके भीतर को निर्मल बनाते हैं। ये उनका महान परमार्थ है और इसी परमार्थ के कारण ही उन्होंने शरीर धारण किया है। और वो जब चलकर हमारे साथ सामने आते हैं तो हमारे और परमात्मा के बीच की दूरी दूर होती है। हमें ऐसी अनुभूति होती है कि हम भगवान को मिले हैं। ये महानता ऐसे संतों के श्री चरणों में बैठने से हमें प्राप्त होती है। इसलिए आज का ये जो अवसर है, स्वामी कृष्णानंद जी, सरस्वती जी महाराज एक साथ इतने स्मरणों स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज के उमड़ रहे हैं, जिनका स्मरण इसी मंच से हमने स्वामी जी के शताब्दी अवसर पर किया था। उनको देखकर प्रमुख स्वामी जी कहते थे कि जब हम स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज के दर्शन करते हैं तो हमारे गुरुदेव योगी जी महाराज का स्मरण होता है। योगी जी महाराज की जो साधुता, पवित्रता, ऐसा ही चिदानंद स्वामी जी के अंदर मूर्तिमंत संतता, ये जो दर्शन था, मैंने तो कई बार बड़े बड़े उत्सवों में प्रमुख स्वामी जी महाराज के पास जब स्वामी चिदानंद जी महाराज पधारते थे, उनके निमंत्रण को हमेशा स्वीकार करते थे। प्रमुख स्वामी जी महाराज ठाकुर जी की मूर्ति, भगवान स्वामीनारायण जी की चल प्रतिमा रखते थे और जो भी कुछ होए भगवान को निवेदित करके, अर्पण करके स्वीकार करते थे। स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज पूज्यपाद हमेशा ठाकुर जी के लिए छोटा हार बनाकर लाते थे, फिर स्वामी जी के लिए एक अलग बड़ा हार। जब वो फलों की टोकरी लेकर स्वामी जी को अर्पण करने आते थे तो छोटी एक फल की टोकरी हरिकृष्ण महाराज भगवान ठाकुर जी के लिए अलग से लाते थे। और इस प्रकार का ऐसा प्रेम भाव 1992 में ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज का शताब्दी महोत्सव गुजरात में मनाया जा रहा था, गांधीनगर में। और उस समय अक्षरधाम का उद्घाटन भी था, गुजरात के गांधीनगर अक्षरधाम का। मंच पर स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज विराजमान थे, साथ में परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज विराजमान थे, अन्य महानुभाव भी विराजमान थे। और किसी ने एक गुलाब की माला प्रमुख स्वामी जी महाराज को अर्पण की, कंठ में पहनाई और स्वामी जी ने उसको निकालकर साथ में रखी। परंतु जब वो गुलाब की माला लाया और स्वामी जी को पहनाई तो उसकी थोड़ी पंखुड़ियाँ, गुलाब की पत्तियाँ, वो मंच पर नीचे बिखर गई। स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज साथ में बैठे हुए थे, वो देख रहे थे। कोई कार्यकर्ता संत आए, उनका एक पैर उस पंखड़ी पर पड़ गया तो चिदानंद स्वामी जी विचलित हो गए।
कोई दूसरे महानुभाव आए स्वामी जी को मिलने के लिए, उनका भी पैर कुछ पंखड़ियों पर पड़ा तो स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज से रहा नहीं गया। वो झट से पालथी छोड़कर अपने आसन से खड़े हो गए और बिखरी हुई गुलाब की वो पत्तियाँ, वो पंखड़ियाँ इकट्ठी करने लगे। हम मंच पर गुरुदेव प्रमुख स्वामी जी महाराज के पीछे ही बैठे थे, तो हम दो संत दौड़कर गए और महाराज श्री को प्रार्थना की, आप आसन पर विराजिए, हम ये ले लेते हैं। तब उन्होंने जो वचन ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज के शताब्दी महोत्सव के मंच पर मुझे कहे थे डायरेक्टली, स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज ने मेरे सामने देखकर उन्होंने मुझे कहा कि प्रमुख स्वामी जी महाराज को चढ़े हुए फूल की कोई भी पंखड़ी जो हमारे पैर के नीचे आ जाए तो बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। मतलब कितना ऊंचा भाव ये महापुरुषों को परस्पर था। यहाँ स्वामी शिवानंद सरस्वती जी महाराज के जन्म शताब्दी अवसर पर जब प्रमुख स्वामी जी महाराज आए थे, इतने पुलकित होकर वो बोले थे कि आज दशहरा, दिवाली, बड़े बड़े उत्सव, बड़े बड़े तीर्थों आज यहाँ ऋषिकेश में इस आश्रम में है। और फिर उन्होंने कहा कि मैं तो भगवान बद्रीनाथ जी का भी खूब खूब आभारी हूँ कि जिनके दर्शन के निमित्त प्रमुख स्वामी जी आए हैं और हमें यहाँ पर उनके दर्शन का लाभ मिल गया। इतने विभोर हो थे उस समय। और एक बार तो उन्होंने कहा था कि जैसे स्टेथोस्कोप को देखकर डॉक्टर की याद आती है, एडवोकेट को देखकर अदालत की याद आती है, हमारे प्रमुख स्वामी जी महाराज को देखकर भगवान की याद आती है। तो ऐसा जो प्रेम भाव परस्पर हमने देखा, ये जो संतत्व का जो ये दर्शन है, वही हमें हमारे जीवन में कृतार्थ करता है और वही हमें धन्य बनाता है। तो ऐसे दिव्य आनंदकारी मंगलकारी जो सानिध्य हमको प्राप्त हुआ है, उस सानिध्य का स्मरण करने का आज का अवसर है और वही हमारा सुख है, वही हमारा आनंद है, वही हमारा वैभव है और वही हमारा जीवन है। तो इसी प्रकार ये महापुरुषों के महापुरुष जिस पद पर चले हैं, उस पथ पर हम चलते रहे और उनके आशीर्वाद, उनकी निश्रा, उनका सानिध्य हमेशा प्राप्त होता रहे और ऐसे अवसरों के माध्यम से उनका महिमा, उनकी महिमा का स्मरण भी निरंतर होता रहे। यही आज उनके श्री चरणों में प्रार्थना। पुनः मैं दिव्य जीवन संघ के अध्यक्ष महोदय पूज्यपाद स्वामी योग स्वरूपानंद स्वामी जी का खूब वंदन पूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ। पूज्यपाद स्वामी निर्लिप्तानंद स्वामी जी, पूज्यपाद स्वामी पद्मनाभानंद स्वामी जी, अन्य महानुभावों, सभी संतों के चरणों में खूब आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसे गुणगान गाने का महापुरुषों का ये अवसर आपने हमें प्रदान किया है। और ये जो प्रेम संबंध BAPS संस्थान और दिव्य जीवन संघ का है, वो हमेशा से चलता आ रहा है। स्वामी शिवानंद स्वामी जी के समय से योगी जी महाराज और उनका जो मिलन हुआ तब से, और प्रमुख स्वामी जी महाराज आज भी परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज इतने आदर पूर्वक, भक्ति पूर्वक, खूब प्रीतिपूर्वक दिव्य जीवन संघ के प्रत्येक कार्य को वो देखते हैं, जानते हैं और आप सभी के प्रति भी उनका इतना ही प्रीति भाव है और सबका प्रेम पूर्वक स्मरण करते हैं। तो गुरु हरि महंत स्वामी जी महाराज की ओर से आप सभी को पुनः पुनः हार्दिक वंदन और इस उत्सव के लाख लाख अभिनंदन। जय स्वामीनारायण। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। हरिओम। परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी कृष्णानंद जी महाराज की जन्म शताब्दी के अवसर पर आयोजित यह आध्यात्मिक समारोह परिषद के अवसर पर हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके प्रमुख स्वामी जी महाराज के परम शिष्य पूज्य स्वामी मुनिवत्सल जी महाराज हमारे यहाँ पधारे और उनका पूरा प्रवचन का अगर सार हम कहें तो इतना ही कह सकते हैं, गुरु कृपा ही केवलम। गुरु कृपा से सब कुछ संभव है।
अगर गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति, हमारा समर्पण भाव पूर्ण रूपेण अगर होगा तो गुरु शिष्य को अपने जैसा बना सकते हैं। मगर इतनी भावना, इतनी श्रद्धा होनी चाहिए। तो प्रमुख स्वामी जी महाराज के बहुत से कुछ प्रसंगों द्वारा भी हमें उन्होंने यह मार्गदर्शन किया। और पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, पूज्य गुरुदेव स्वामी चिदानंद जी महाराज, सभी के प्रति प्रमुख स्वामी जी का जो भाव सदा रहा है, उनको भी वो बार बार याद करते करते हुए गुरु कृपा क्या है उनके बारे में बताते रहे हैं। तो हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आप पधारे और सभी यहाँ उपस्थित साधकों का मार्गदर्शन किया। मैं पूज्य स्वामी मुनिवत्सल जी महाराज का ये दिव्य जीवन संघ, डिवाइन लाइफ सोसाइटी मुख्यालय की ओर से और सभी वरिष्ठ स्वामी जी की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। हरिओम तत्सत। ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय। सभी साधक और भक्तों को अनुरोध है कि अपना स्थान ग्रहण करें। अभी परम पूज्य स्वामी निर्लिप्तानंद जी महाराज का आशीर्वचन और मार्गदर्शन प्रवचन का कार्यक्रम है, इसलिए आप सब अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी लोग जानते हैं कि गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज के बारे में डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने अपनी जीवनी में उनका भी एक प्रसंग का उल्लेख किया है। डॉक्टर अब्दुल कलाम जब एयरफोर्स में जाने की इच्छा रखते थे, महत्वाकांक्षा रखते थे, तब एक बार ही उनका ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, मगर उनमें वे फेल हो गए। उनका नंबर 8 नंबर आया तो वो निराश हो गए, डिसअपॉइंट हो गए।
अचानक यहाँ शिवानंद आश्रम के सामने जो हमारा घाट है वहाँ उन्होंने स्नान किया और स्नान के बाद वो ऐसे ही चले आए आश्रम में। और गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज इनके भक्त के साथ वहाँ बैठे हुए थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम आते हैं, वंदन करते हैं, स्वामी जी उनसे पूछते हैं कि आपका नाम क्या है। तब डॉक्टर अब्दुल कलाम सोचते हैं कि अगर मैं उनको मेरा नाम कहूँगा तो ये तो हिंदू साधु हैं तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, क्यों मैं तो मुसलमान हूँ, इस्लाम धर्म का अनुसरण करता हूँ। तो उन्होंने थोड़ा संकोच हुआ अब्दुल कलाम को, तो उन्होंने फिर नाम बताया स्वामी जी महाराज को। तो स्वामी जी महाराज के चेहरे पर तो कोई भेदभाव इत्यादि था ही नहीं, उनके मन में भी कोई भेदभाव नहीं था। उन्होंने कहा आप कुछ पजल में लगते हैं, आप डिसअपॉइंट हुए हैं ऐसा लगता है। तो उन्होंने बताया कि मुझे एयरफोर्स में जाना था मगर मैं नहीं जा पाया, इसलिए मैं डिसअपॉइंट हुआ हूँ। तो गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते हैं जो हुआ वो अच्छा हुआ, आपके द्वारा तो और भी बहुत अच्छे काम होने वाले हैं और ऐसे ऐसे पद आपको प्राप्त होने वाले हैं, इसीलिए आपको डिसअपॉइंट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तब आगे जाके अब्दुल कलाम कहते हैं मुझे मेरे मन में इतना जोश आ गया और स्वामी जी से आशीर्वाद और प्रेरणा लेने के बाद मैं अपने काम में फिर जुड़ गया। तो महापुरुष ऐसे होते हैं कि जो सबका दुख दूर करके और उनको कैसे आगे बढ़ सकते हैं, वही उनके प्रेरणा इनसे प्राप्त होती है। मैं हमारे डिवाइन लाइफ सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट परम पूज्य स्वामी निर्लिप्तानंद जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप व्यासपीठ पर पधारें और सभी साधकों और भक्त लोगों का मार्गदर्शन करें।
गणपतये नमः। ॐ गुरुभ्यो नमः। ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते रामचन्द्राय। ॐ नमो नारायणाय। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजड्यापहा। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। हरिः ओम। All the saints who are present today in this afternoon's session of the 3-day spiritual conference which has been organized in the holy memory of most worshipful Sri Swami Krishnanandji Maharaj for his birth centenary celebrations. And this is the 3rd day and concluding session. And all of you who are present, all the saints, all the sannyasis, and all the devotees, and all the other great, our respected guests also who are present today, my humble salutations and prostrations to you all. It has been a very nice experience that for the last 3 days we have been having a lot of spiritual discourses and many ideas also have been put forth. It has been very enlightening and also very elevating in every way. It was in the holy memory of worshipful Sri Swami Krishnanandji Maharaj. Lot of things have already been told and we have heard also. It was a great opportunity for us to hear about the greatness and glory of Param Pujya Sri Swami Krishnanandji Maharaj. Swami Krishnanandji Maharaj, as we all know, he was one of the greatest saints of the Divine Life Society, one of the foremost saints or disciples of Gurudev Swami Shivanandaji Maharaj. Swamiji Maharaj came to this holy abode of Gurudev Swami Shivanandaji Maharaj in 1944, as we all know. And since then, he had been in this ashram only, and
up to his last day, up to 2001, Swamiji Maharaj totally dedicated himself for the mission of Gurudev Swami Shivanandaji Maharaj, in service of Swami Shivanandaji Maharaj and his holy ashram. And he had no second thought. He had no personal motive. He never thought of himself at all. Always he was thinking of Gurudev Swami Shivanandaji Maharaj, about the holy ashram, and what best can be done by him in service of this holy institution. That was uppermost in his mind. He was thinking only of that day and night. So such was the dedicated life of Swami Krishnanandaji Maharaj in this ashram. Swamiji Maharaj, he became the general, he came in 1944, joined the ashram, had darshan of Gurudev Swami Shivanandaji Maharaj. He had sannyas in 1946 after 2 years of coming to the ashram. And since then, in various capacities, as the sannyasi, as a saint, and also whatever work was given to him by Gurudev Swami Shivanandaji Maharaj, he was doing it with all sincerity and dedication. It is from his life actually we have to learn a lot, how he was totally dedicated to the service of his Guru, for service of Gurudev Swami Shivanandaji Maharaj, and in following his instructions to the very letter, how a devotee, a disciple should look upon the words of his master. Mantramulam Gurur Vakyam, like that we have heard. And Swami Krishnanandaji Maharaj never budged an inch from this principle. He always, whatever Swami Shivanandaji Maharaj said, it was Veda for him. It was a holy word and he followed it strictly. This is what we come to learn from his life. And this is a great example for all of us. And Swami Krishnanandaji Maharaj, when Swami Chidanandaji Maharaj had to go to the West in 1959, at that time Swami Shivanandaji Maharaj made Swami Krishnanandaji Maharaj the General Secretary. As General Secretary since 1959 up to 2001, he untiringly carried on the service of the holy ashram, of the Divine Life Society. And whatever best was possible on his part, that he did it, etc. So, all along, he had totally consecrated himself, totally dedicated himself to the work of Gurudev Swami Shivanandaji Maharaj. And then, in not only as the General Secretary, but whatever was required to be done in the office, he was handling all this, the correspondence work. He was also writing articles for the Divine Life magazine. He was also the editor of the Divine Life magazine for many, many years. And he also gave talks, gave lectures whenever it was necessary. And he was also the professor of Vedanta in our Yoga Vedanta Forest Academy when it was established by Gurudev Swami Shivanandaji Maharaj. Swami Krishnanandaji Maharaj was made the professor of Vedanta. And in that capacity also he guided many of the sevaks. He guided many of the participants of the Yoga Vedanta Forest Academy, all the students who came there, etc. Like this, in various capacity, he was, and he was also meeting the devotees. He was also, at some point of time, he was also a guru, a teacher for many of the seekers who came to him like this. So, like that, his
seeing his so much of feeling for Gurudev Swami Shivananda Maharaj, so much dedication, and yet so simple and humble, Gurudev Swami Shivananda Maharaj used to like him very much. And in the initial years, our evening satsang was being done in Gurudev Kutir, where Gurudev Swami Shivananda was the same Kutir. There only the evening satsang was being done. And Swami Krishnananda Maharaj was put in charge of that satsang to lay the carpets and then make all arrangements, etc. He used to do. That was the work which Gurudev Swami Shivananda Maharaj had given him. And it so happened that that is the evening time. In the evening, you see, at that time, all these arrangements have to be made. And that also happened to be the evening supper time, the meal time of Gurudev Swami Shivananda Maharaj. So, what Swami Shivananda Maharaj used to do every day, he will wait till Swami Krishnananda Maharaj comes there. And whatever food was given to him, out of that, a little portion he will keep for Swami Krishnananda Maharaj. Every day he used to do that. And this was not to the liking of the person who was cooking for Swami Shivananda Maharaj. And he also did not like it. He was thinking that, you see, oh, this Krishnananda is coming deliberately only at that time when Gurudev Swami Shivananda has to take his food. And that is why, and Gurudev helplessly has to part with a part of his own food, own meal, etc. That is why it's not a right thing. Then in the administration, you see, they made some complaint to the secretary and all that. And then the secretary told at that time, no, then don't, you ask Krishnananda not to come at that time, like that. So Krishnananda Swamiji did not come thereafter for 2 days. He came and etc. And then Swami Shivananda Maharaj thought, why is Krishnananda is not coming at that time? Why he is coming late? And then he also asked Swami Krishnananda, you see, you are so obedient and you see you are very punctual. Always you do the work in right time. What happened to you? Why are you coming so late nowadays? What is this? He said, no, Swamiji, I had got some difficulty, something like this, he said. And then thereafter again he said, he did not say anything and still he kept quiet. One day went like that, the next day. And then Swami, again when Gurudev pressed for an answer, what exactly had happened, then Swami Krishnananda Maharaj has to explain, Swami, this is how it had happened, like this. And thereafter Gurudev did not say anything to anybody. And Gurudev said that I will not take food. And if Krishnananda Swamiji does not come, I will not have my food. Like that Swamiji said, when he said that, Gurudev said, then they all felt that it is not a right thing that we have done. It is not to the liking of Gurudev Swami Shivananda Maharaj. That is why. So thereafter they had to change it. And Gurudev continued with the same way as he was giving food, a part of it, you see, as prasad to Swami Krishnananda Maharaj. This only shows how Gurudev liked Swami Krishnananda Maharaj. And that is because of his sincerity and all that, etc. And Swami Krishnananda Maharaj was a very great writer, as we all know. He was a very great writer. He was a very good speaker also. And then he was actually a great orator also. He spoke very well. He was very good at all these things. And Swami Krishnananda Maharaj was actually a great genius. And just now, our Muni Vatsalji Maharaj, he was mentioning about the realization of the Absolute. How it all was done by this. What happened at that time, Swami Krishnananda Maharaj was staying in that music hall, near that room was there. So Gurudev Swami Shivananda Maharaj in the evening, he was passing by that side. And then through the window, Gurudev actually peeped into Swamiji's room. And then he asked, hey, what are you doing? He asked Swami Krishnananda Maharaj. So Krishnananda Maharaj, Swamiji, I am just, he didn't say anything, just you see, TNP Mahadevan of Madras University
has written a very good book as the philosophy of the Advaita. And this has been appreciated by everybody, it has been acclaimed by all. And so then Swamiji said, Gurudev said, why don't you also write something like that? So at that time, Gurudev Swami Shivanand Krishnanand Maharaj did not say anything. He just kept quiet and thought over the matter, and from immediately thereafter he started writing the first book and the realization of the Absolute. That was the first book of Swami Krishnanand Maharaj. For that he just sat down and he wrote continuously. In 15 days time, 15 days, he completed that book, The Realization of the Absolute. At that time, it was 1947. At that time, his age was only 25. He came at the age of 22, and then after 3 years in the ashram, he wrote this particular book. In 15 days time, it was so perfect, with chaste English and all polished to see this language, and then excellent ideas which it was there. In just 15 days time, he wrote in his long hand. It is not that he dictated to somebody, somebody wrote it. He himself wrote it. So in 15 days time, how he could write such a great book, it's a great, solid work. So the realization of the Absolute. Now if we read that, we may not be, many of us will not be able to understand it. And we cannot make a single correction or change in that particular, the whole book. So perfect and so beautifully it has been written, and it is one of the masterpieces. And it is actually appreciated all over the world. So this was the caliber of Swami Krishnanand Maharaj. He was really a great genius. And then he was also a very great scholar, Swami Krishnanand Maharaj. And then he was actually an intellectual giant. He is so much of, he knew, and he had so much of knowledge, and he had the mastery of all the Indian scriptures. Gita, this Upanishads, Brahma Sutras, then Yoga Sutras, then Bhagavatam, Ramayana, Mahabharata, all these books, all the scriptures he had read, and he had also got full mastery over the teachings of these scriptures and full grasp of their teachings or importance. So that was his Swami Krishnanand Maharaj, and he also had full knowledge and mastery over all the Indian schools of thought, Indian philosophy. All the schools he knew. He studied their books very thoroughly and understood it, and also made a very good comparative assessment. And for each philosophy, what exactly is its position, what is its place in our overall philosophical thought, that actually Swamiji Maharaj had made a very good assessment. And he had also written this, he had also very good idea, mastery over the Western philosophy. He had studied all the important philosophers of the West, and he has written a very good assessment, critical assessment of all their philosophies, and touched upon the most important aspects of their teachings. And in one book, Studies in the Comparative Philosophy. It's a small book, but it's very precise, and the most important things that is, and how their philosophies are also relevant to the overall world philosophy in the world, and all this that also Swamiji Maharaj has written. That is also a very good thing. And Swamiji Maharaj, he was himself a very great Vedanti. He believed, or he that the realization of the Absolute, as he had written, that Absolute is the final thing. That is the Supreme Being. It is the Absolute. And in that, actually, everything Vedanta teaching is there. Vedanta actually teaches that. Whether it is Brahman or Atma or this the Absolute, they are all the same. And God.
They are all, it is only different ways of looking at the same thing. So it is about the absolute. That was his highest understanding and philosophy, and that was his goal. He wanted to realize the absolute, as we see from what has happened afterwards, etc. That is why Swami Krishnananda Maharaj, but he was also a Vedanta bhakti. He was also a very great bhakta. So he combined both Vedanta and bhakti, devotion in himself. And once in 1997, when the 75th birth anniversary was being celebrated in our ashram, Platinum Jubilee, at that time Swami Ji Maharaj, actually Bhagavad Saptah had been arranged. And in that Bhagavad Saptah, Swamiji said that, you see, people think that I am a Vedantin. So then he says that, you see, Vedanta Gidanta kuch nahi hai. And I am actually a bhakta of Lord Krishna. Vedanta kuch nahi hai, main to Krishna Bhagavan ka bhakta hu. There is nothing, it's all, you see, this not so, it is not correct that I am a Vedantin. I am not a Vedantin, I am really a devotee of Lord Krishna, like that Swamiji said. So how he was combining both Vedanta and Bhakti together, and it's a harmonious combination. How he has been able to blend both these things in his life, in his thought, in his thinking. That is what we see from Swami Krishnananda Maharaj. In fact, Swami Shivananda Maharaj also had that view also. And it is a synthesis of everything. So how both the things, Swami said that these are all, both the things are necessary. In the Bhagavad Gita also Lord Krishna says, he speaks about the Jnana or Vedanta. At the same time, he lays great emphasis on the Bhakti or devotion. Like that, if we study, we will come to know that itself. So, and Swami Krishnananda Maharaj did not reject any philosophy. For him, all philosophies, all schools of thoughts are valid. They are important in their own way. They have their own value. And then they have their own place also in the overall thinking or thought of the Vedanta, the thought of the Absolute. So this Absolute actually includes everything. The thought of the Absolute, philosophy of the Absolute includes all other schools of thoughts also. There are only different stages of development. Each has its own place. Each is important in its own way, and this also is suitable for certain persons at the certain stages of development in the spiritual path. Like that, Swami Krishnananda Maharaj had been able to synthesize everything. He was looking upon everything with equal importance and respect. He never rejected anything. He never thought that it's a useless thought, like that he never said. Because his idea was that this particular thought has been given by some great master, and then after great thinking of a person of attainment, he has given it. So it has its own value and utility. Like that Swami Krishnananda Maharaj was saying. So he was able to synthesize everything, and he took a holistic view of all the schools of thought. It was a total view. In his view, everything was included in that. And Swami Krishnananda Maharaj synthesized everything. And then Swamiji Maharaj was also a very great writer. We have just spoken about it, that he is a great writer. It started with that realization of the Absolute. And afterwards, Swamiji himself did not write much by himself, but he spoke. And he gave lectures also. Somebody took dictation, like that it was being done. One or two things he wrote by himself only. And the most important thing is his language was perfect. He had perfect, complete mastery over the English language. His language was of a very high standard, and it was perfect and chaste English. And his expressions were also perfect. And he was able to convey all his ideas also in a very perfect manner. So in every way, all his writings are actually perfect ones. They are solid ones, and they are a very great importance is there for that also. And Swami Krishnananda Maharaj, and what is more important, most of his books are masterpieces.
realization of the Absolute is a masterpiece by itself. And Swamiji also wrote that philosophy of life, which contained the teachings of Swami Shivananda Maharaj. He put it in a very coordinated and then synthesized manner, etc. Philosophy of life, that itself is also a masterpiece. And he has also written the philosophy of the Panchadasi, and he also has given lectures on this, the Chandogya Upanishad. It is an excellent exposition. It is very rare to find such another book like this which has gone so much in depth into the philosophy of the Chandogya Upanishad. Similarly, on Brihadaranyaka Upanishad also, that's also a very good book which gives all his lectures and all his talks and some important chapters of the Brihadaranyaka Upanishad, he deals with them. And then we have also, and Yoga Sutras also. On Yoga Sutras also he has given his views, he has expounded. And then in the book, Study and Practice of Yoga, like that is his book in 2 volumes, that's also a book. So most of his books are masterpieces. And they contain the perfect ideas, and they are also very good, you see, a very good guidance. And many of the ideas which Swamiji Maharaj has expressed there, probably we do not find so easily at some other places, in other books, etc. This is what Swamiji said. So, and whatever he said is perfect and correct. That was the correct view, which we can safely follow the views of Swami Krishnananda Maharaj, because they are perfect and well balanced and very reasonable and with solid background, solid grounds, it has been established. So these are his masterpieces, this is what we should do. And Swami Krishnananda Maharaj was also an ideal seeker, ideal sadhak. And all along he considered himself as a sadhak. And he was always engaged in his spiritual sadhana in his own way, whatever he thought that this is the way we should do sadhana, like that. So he was an ideal spiritual seeker, and he was a great saint. It is not that he is just a Vedanti, and so but he was himself a very great saint. As a saint, you see, he was very kind, very compassionate, and he had consideration for everybody. And he was also just now he mentioned our Sadhu Muni Vatsalya, how in the ashram also, like a mother, you see, he was treating all the inmates of the ashram. He was always careful and kind. He was trying to help everybody as much as possible, whatever he could do. And then he never harmed anybody. He always saw to it that, you see, I don't cause any harm to anybody. So he was practicing ahimsa to the full letter. He was always conscious and aware that through me nobody should come to grief. I should not be a cause of harm to anybody. Like that Swami Krishnananda Maharaj was saying this. And he always tried to help others as much as possible. And not only within the ashram, but outside also, whichever devotee came, he tried to help them as much as possible. It was on his part. And he was also leading a very simple life, simplicity of life, simple living and high thinking, as Gurudev Swami Shivananda Maharaj says. That was his principle. He was very, very simple. His life was very simple. He did not have much possessions, and then he was very happy and satisfied with whatever things were available to them, the minimum measure. He did not have any want. He did not never wanted, I want this, I want that, which is normally people do that. Swami Krishnananda Maharaj, he did not have any want at all. And whatever minimum was necessary for him, with that he was trying to manage, and he was happy and contented and satisfied. That was so. His life was a very simple and ideal seeker. Every seeker actually has to be like that only, and not for going for luxury and wanting this thing, that thing. He did not have any possession of his own. Aparigraha, he was actually following. Although things, many things were there in the ashram, as it is there, because he is the general secretary, everything is available and all that. Yet, he was totally unattached. He had no attachment for anything,
He did not have any possession, any clinging to anything in this life, of any object or any person or anything. He did not have that. He was totally without any attachment. And he was aparigraha. He did not have any possession, not clinging to anything at all. He was ready for anything else. Okay, let it be. Like that he was. So that was as an ideal seeker and a saint. These were the characters of Swami Krishnananda Maharaj. And most important thing is that Swami, he was a master of Bhagavad Gita. He had read the whole of Bhagavad Gita. He had got by heart the whole of Bhagavad Gita. It was in his memory. So in the Bhagavad Gita, whatever teachings were there by the Lord, that he said that he remembered very well. The Lord said that the goal of life is God realization. We have discussed. People have discussed here. And liberation was his goal. We have to be, Lord Krishna says that this world is full of sorrow. Mamupetya punarjanma dukkhalayam asasvatam napnuvanti mahatmana sansiddhim paramangataha. Like that the Lord has said. So by attaining me, the Lord says, by attaining me, one will be free from the rebirth. He doesn't have to come to this world again, because this world is janma mrityu jara vyadhi dukkha. This is old age, birth, death, then disease. All these things are attendant upon our life. We have so many kinds of sorrow and suffering. So if we have a punarjanma or rebirth, again we come back to the same circle. We have to have liberation. That is the teaching of the Bhagavad Gita. And the Lord Krishna says, what will you do for that? He said, Anityam asukham lokam imam prapya bhajaswaman. Having come to this particular world, this type world of sorrow and which is impermanent, you seek me, you take refuge in me, you worship me, like that the Lord says. So this Swami Krishnananda Maharaj had accepted that the goal of my life is to have liberation. I must be free from that, from rebirth that he had taken upon himself as this is my goal. And for that only he renounced his family, the world, and then came to Swami Shivananda Maharaj in our ashram, to the Himalayas. And in liberation, and it is quite clearly it is mentioned that anybody who attains God realization will not have rebirth. Swami, the Lord says, Mamupetya punarjanma dukkhalayam asasvatam naira. This will not be there at all. A person who attains me, he will not have this rebirth. This was the basic principle which Swami Krishnananda Maharaj has held on to it. And like that he followed it. And then how it will be Swami, so in one yam jam vapi smaran bhavam tyajatyante kalevaram tam tame vaiti kaunteya sadatat bhava bhavita. This is also a teaching of the Bhagavad Gita. There is said that whatever thing a person always thinks of, and thinking that he leaves this body, he attains this in the next birth. Accordingly, his next birth will be decided. And then the Lord says, so therefore at all times you remember me and carry on with your duties. Tasmat sarvesu kalesu mamanusmara yudhyacha. This is the solution the Lord has said. This is the way the Lord has shown us. Swami Krishnananda Maharaj said, so how to have God realization, not to have this rebirth at all. And for that, liberation is the goal of our life. And Swamiji Maharaj was that, and he was always keen about it. And the Lord says that whoever always remembers me, if you remember me always, so at the time of death also you will have the same thought. Then you will not have to come back to this world again. Like that the Lord has given the teachings. So always we have to remember this. That how to always remember. That is why Swami Krishnananda Maharaj used to ask, what are you thinking during the day? Most of the time, what do you think? That only indicates where you have got your interest. That only shows what will be your next birth after death. After death, what will happen to you? That will be determined by what you are thinking throughout the day and where you have got this interest.
And then he says that always we must try to remember God. And that is why Swami Krishnananda Maharaj, always he only remembered God. Most of the time he would be thinking of God only. Contemplation of God was his the most important thing in life. And Swami, that is why he said that his teaching advice was, you should not take another birth. Like that he was telling the devotees. And for that one must always think of the Lord. That is how it will be done. And for liberation, Swamiji Maharaj had also had one view. Liberation is also of two types. Mukti. Mukti is of two types. One is Krama Mukti. The other one is this Sadhyo Mukti. This Krama Mukti is gradual liberation. A person actually who attains God realization, who doesn't have to come back to this world again, he will be liberated. And in other types of cases where there will be one type of liberation where there will be instant liberation. In the instant liberation, in the Brihadaranyaka Upanishad it has been there, yo akamo, niskama, aptakama, atmakamo, natasya prana utkramanti, brahmaiva san brahma piyeti. Like that it is told in the Upanishad. That means a person who is free from all desires, who has no desire, akama. Niskama, from whom all desires have been released. That means all desires have left him, niskama. And then aptakama, a person who is, all his desires have been fulfilled. He has no unfulfilled desire. He has no sense of having any desire which is still unfulfilled. So such a person is called aptakama. And this type of three things. And in addition to that, a person who has got only Atma or the self as his only desire, Atma Kama. A person who has got these four qualifications, Akama, Niskama, Aptakama, Atma Kama, Natasya Prana Utkramanti. In his case, his vital airs, his pranas actually do not depart anywhere. So in order to take another birth at some other place, etc. And in his case, here itself, his prana or the vital airs, they merge. And he himself becomes Brahman. And he also merges in Brahman. That means merging in Brahman. There you see, it becomes usually, he merges in Brahman means, that is instant liberation. The moment he drops his body, he gets fully liberated. This is instant liberation, Sadhyo Mukti, like that it is there. Swami Krishnananda Maharaj had got this particular thing as his goal, as his absolute, as his the objective for which he was actually throughout his life, he was dedicated, he was doing it. So on the last day, on this, which was November 23rd, which was Gopastami, on that early morning, Swamiji Maharaj, at 4 o'clock he got up, and our Muni Vatsalji Maharaj was mentioning about it. So he got up at 4 o'clock, and then he said that Satyakam Swamiji was there. Just immediately he called him, gave a bell and called him. Then he said that, you see, oh Satyakamji, today you see, it is, I am leaving today. Like that he said. Early morning, 23rd November. And then he said that, you see, and why, and Satyakamji said, no, Swamiji, why you are thinking like that? Why are you believing? I saw a dream like this. No, why are you believing in dream? You are a great Jnani, and Gurudev Swami Shivananda Maharaj has said that he has praised you so much for your spiritual attainments and etc. Why are you giving so much of importance to this dream? Dream is not that. Then Swami Krishnananda Maharaj said, no. You see, you do not know. You see the Bhagavad, that Yoga Vasishta, in that particular Yoga Vasishta, it is there. There it is written. In the case of a person who has realized, who had got realization, and in his case, whatever he sees at the Brahma Murta in the dream, that will come true in the waking state. In his case, the dream in the Brahma Murta will be the same as waking experience, and he will also. So this is going to come. Today I am leaving, like that. And it so happened in that day, on that day itself, at about 4 o'clock, 4:25,
They were all mentally ready. Swamiji Maharaj had declared fully, emphatically that today I am leaving. So at that time, and Swamiji Maharaj was, this is what is there. So he said actually that at about 4:25, he had got some breathing difficulty. And when he had the breathing difficulty, because Swamiji Maharaj was having asthma problem throughout his life from the birth itself. So they thought that people who were attending on him, they thought that probably Swamiji has a bout of asthma, so gave this, what is the nebulizer and all that, they gave it to him. And Swamiji said, no, you see, abhi mera pran ja raha hai, my, you see, prana is going away now, I am now merging in God. So it is not that, so he threw it away, and just at that time only in 5 minutes, it was 4:25, it happened like this, and then immediately Swamiji Maharaj said that now I am merging in God Almighty. This is what he said at 4:25. Within 2-3 minutes, he had his last breath, and the breathing stopped, and then it was all over. And that is how it happened in the case of Swami Krishnananda Maharaj. And that is why Swami Krishnananda Maharaj used to say, even 2-3 years ago, he had also told us that, you see, when I die, I will go to God. Again he had said that when I die, I will merge in God. Like that, Swamiji Maharaj 2-3 times he had told. I have myself heard it. And on that day, it just happened like this. On that day, Swamiji said that now I am merging in God Almighty. And he was fully conscious of God. He was remembering God. That is why in the Bhagavad Gita, Lord Krishna says, Antakale cha mameva smaran muktva kalevaram yah prajanti sa madbhavam yati nastyatra sansaya. A person at the last moment who remembers me and leaves his body, he surely comes to me. There is no doubt about it. So that is why Swami Krishnananda Maharaj, how he merged in God, and how Swami Krishnananda Maharaj, in his case, how it was instant liberation. In case of Kramamukti, what will happen? All the persons who do not have rebirth, they will not go to God. They will go in different ways, and then they will go to Brahmaloka. In the Brahmaloka, the world of Brahma, there they will remain. And till the final dissolution, Pralaya. When there is Pralaya, Lord Brahma will merge in the Absolute, in God. And then along with him, all the devotees also who have got this Kramamukti, who have been waiting in that in Brahmaloka, they will also merge in God along with Brahma. That is what will happen. They will have to remain. But in case of Swami Krishnananda Maharaj, he had Sadhyo Mukti, instant liberation, here itself, here and now, he merged in God. That is what, this is what we have heard, we have seen from Swami Krishnananda Maharaj. So, it is our great good fortune that we are having this centenary celebration of Parapuja Sri Swami Krishnananda Maharaj. We are blessed. It's a great opportunity for all of us to think of him, to contemplate upon him, and to also see his ideals, how he was an ideal seeker, and how throughout his life, that is why days and nights, you see, he was never wasting any time. He was always contemplating on God only. He was always remembering Brahman. He was always rooted in Brahman, Brahma, this sthiti. So that is why, that is how it has happened. This is what Swamiji used to say, that you see, you must try to do this, always think of God, remember God. Like that in various ways he used to say that. This is what we should do, etc. So we are very, very blessed, and we are fortunate that we are having this centenary celebrations of Parampujya Sri Swami Krishnananda Maharaj. And may the blessings of God Almighty, Gurudev Swami Shivananda Maharaj and Parampujya Swami Krishnananda Maharaj be upon all of us, so that we go on the path shown by them, and we also try to reach our goal as much as possible. Thank you very much, all the best, and I am sorry for having taken a little more time. My apologies for that. हरिओम। हम सभी पूज्य
स्वामी निर्लिप्तानंद जी महाराज के बहुत बहुत आभारी हैं, जिनकी शताब्दी हम मना रहे हैं, इनके बारे में सुनने का ये हमें अवसर प्राप्त हुआ। और अलग अलग विविध प्रकार के सब्जेक्ट पर तो हमने अलग अलग स्पीकर्स को सुना, मगर जिनकी शताब्दी चल रही है और वो जिसके लिए समारोह ये हम मना रहे हैं, इनके बारे में अगर हम अनभिज्ञ हैं तो ये बड़ी दुख की बात है। मगर पूज्य स्वामी जी महाराज ने हमें परम पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज की जीवनी के बारे में और उनकी सद्यो मुक्ति के बारे में जो बताया है, इससे बहुत आनंद हुआ। थोड़ा ज़्यादा टाइम हुआ, मगर ऐसा लगता था कि स्वामी जी को सुनते ही रहे और स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के बारे में और भी कुछ हमें सुनने मिले, ऐसा भाव होता था। हम बहुत आभारी हैं पूज्य स्वामी जी आपके, और जो मार्गदर्शन किया है इनके लिए। मैं अभी परम पूज्य स्वामी योग स्वरूपानंद जी महाराज, जो हमारे डिवाइन लाइफ सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं, उनको प्रार्थना करता हूँ कि आप पधारे और सभी भक्त वृंद का मार्गदर्शन करें और स्वामी जी के जीवन पर हमें थोड़ा प्रकाश डाले, ताकि स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के बारे में हम ज़्यादा कुछ समझ सकें उनको। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमदास्य श्रीशङ्कराचार्यमदास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारं शिवानंद चिदानंद कृष्णानंदान्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। अन्यदा शरणं नास्ति
त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष महाप्रभो। ॐ यो ब्रह्माणं विददाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तगुंहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Today, this is the last session of the spiritual conference on the auspicious occasion of Sri Swami Krishnanji Maharaj birth centenary celebrations. Today we are sitting here because of so much effort and tapasya of all the senior disciples of worshipful Gurudev. Because Swami Shivananda Maharaj lived in such a way, he was always just like a baby. Those who lived with him, they used to tell Swami Shivananda was like a big baby. Body was so big, but his mind was so innocent and very simple. He lived every moment of life. And his motto is serve all and love all. And what he spoke implicitly, he applied in his own daily life. Start the day with God, spend the day with God, and end the day with God. This is way to God. He lived in that spirit. And because at the time Swami was so innocent and simple, it is Sri Swami Paramanandaji Maharaj, Sri Swami Venkateswarji Maharaj, Sri Swami Chidanji Maharaj, Sri Swami Krishnanji Maharaj, Vishnudevanji Maharaj, Sachidanji Maharaj, and Hridayanji Maharaj. They were all used to work and help Swamiji. And then they were all so much in all the senior disciples of Gurudev. We can see one simple character, simplicity and very generous nature. They lived in that spirit. And today we are all sitting here because of that tapasya and dedication and love of Gurudev. Swamiji was very, very kind, and he brought all the teachings of Gurudev, the teachings of ancient scriptures in a very simple way, and lived in that spirit and also guided them to live in that spirit. Today we are sitting in this August very big hall, and because of their tapasya and kind effort, and I'm also very much thankful to all the persons. This is a concluding session. I felt how much we are deriving the spiritual benefit by celebrating birth centenary of Krishnanji Maharaj. For these functions, I can immediately, it is impossible to express my thanks by words to our most revered Sri Swami Padmanabhanji Maharaj and Sri Swami Advaitanji Maharaj. They contacted all the Ganapatikals, Pandits, Acharyas, and then they made these. Originally we want to made to celebrate for 100 days. Due to COVID pandemic, we are not in a position to do it. Then we started this function from 18th March onwards. And Swamiji's Padmanabhanji Maharaj and Advaitanji Maharaj contacted many Pandits and Acharyas, and they made us to hear the Veda Ghosh repeating. We never got such a chance to hear Ruk, Sama, Yajur Vedas,
and also twice Rudrabhisheka's mantras and repetition. This happened only during this period. This could not happen during Swami Gurudev Swami Shivananda Maharaj birth centenary or Chidananda Swami birth centenary. This happened during this birth centenary of our Krishnanji Maharaj, because Swamiji was so much interested in Veda mantras and Vedas, and also in the last days of Swamiji, and he began to do many homas, yajnas and charities, all these things. And I am no doubt Krishnanji Maharaj must be very much happy and pleased to see these noble activities happening from 18th March onwards. And here it is because of that kind cooperation of Niliptanji Maharaj, our Padmanabhanji Maharaj, Advaitanji Maharaj and Sadashivanji, all the trustees and members of the Board of Management, and their cooperation, these functions are happening very well. And I am thankful to all the Swamijis, especially in reception department and also Annakshetra department, and especially Sri Swami Krishna Bhaktananji Maharaj, Sridharanji Maharaj, Aksharanji Maharaj, and also Ramanishtanandaji and Shashwatji of SPL and all sadhakas. And because of their kind cooperation, these functions happened so beautifully, and many people, those who are not here, our functions are seen internationally all over all the countries. They are appreciating the Bhagavata Saptaha, or in English as well as in Hindi, conducted by our Padmadis Brahmasri Ramana Tirtha Charana Sri Nochur Venkatramanji. Many people ask me to convey grateful thanks to Nochur Venkatramanji Maharaj and Swamijis, especially Swami Mandir Department of Vishwanath Mandir, Samadhi Mandir, and all other Swamijis are working night and day. I am very, very thankful to all of the Swamijis. And spiritual conference is such, it is called life in the spirit. Normally, our Krishnanji Maharaj used to tell there are 5 perceptions: physical perception, sensory perception, mental perception, intellectual perception, and spiritual perception. And here, purpose of divine life is to change our vision to spiritual perception. Otherwise, our Krishnanji Maharaj again emphasized, and when I asked Swamiji Maharaj, I got the privilege to serve Swamiji from the day one from 1964 up to 1973. Afterwards, Swamiji asked me to go to Mysore Academy. Similarly, I got the privilege to serve Swami Chidananda Maharaj from 1977 to 2001. Then Swamiji began to go to Uttarakhand and other places. Because serving them only, I learned many things from their personal life. It is said their life is so simple, and we can hear the saying, simple living and high thinking, we can see from their life. Swami Krishnanji Maharaj again used to tell, every act of oneself should be a conscious contemplation on the Absolute. Absolute is the life principle, without which everything is futile. Again, Swamiji put it in a very simple word, we are all nothing but zeros. Here in Sivananda Ashram, Gurudev is the only one number. And because without him, nothing is possible. Swami Shivaji Maharaj is such a kind person. In the beginning, when Krishnan Swamiji came to ashram, he was asked to serve in bhajan hall. In those days, only one small blanket will be there, and special gift, luxury is
to have one gunny bag in the night during winter months. And Swamiji, because daytime he used to do kirtan, and then because of so much dust, Swamiji found he has got some asthma. Then he gave him a special room in Yoga Sadhana Kutir. And then Swamiji used to send some special, in summer, a special privilege is to have a glass of tomato juice. Shivani Maharaj specially will send to Krishnani Maharaj. That is the speciality. Swamiji took special care. Then Krishnan Swamiji, by talking about Gurudev, he becomes so much emotional, and he said, such a love, such compassion, he never get it in his own, from his own mother and father. Such was the love and affection bestowed by Swami Shivani Maharaj to Swami Krishnani Maharaj. Swamiji's life was very simple, and then he will, as Swamiji was telling, at the time up to 1972, he was very, very simple, and then he will have only 2 kadas, and small tape will be there. When it is turned out, and he himself will repair it, he will get one cutting plier, one hammer, he will repair that, and he will walk only with that. Up to 90, it's Golden Jubilee. And very difficult to get photograph also. And Swamiji Padmanabh Maharaj found very difficult to get photographs, because Swamiji never allowed to have any photographs up to 1972. It was one Nagarkarji announced that Swamiji's Golden Jubilee in 1972. Then after 82, Swamiji, so much change took place, and Swamiji became most liberal and then little free. Otherwise, Swamiji was very, very strict in his daily life. And for me also, you have to go, even if you go to toilet, all these things, you must take baths, change your clothes, then only you will have to serve him. There was so much orthodox in those days. And Swamiji was very simple, and then very, very interesting to see how the life has changed. And Swamiji was very kind and very generous, and he was just like a simple evening when you take supper, afterwards he will tell so many stories. He's got a specialty to do mimicry, and then he will tell how the 2 dogs will fight in a very beautiful mimicry way. And then we used to laugh and laugh about somebody gives lecture in the satsang, next day evening he will imitate and mimicry. That is one of the fear I don't like to talk during Swamiji's time. And he will imitate so much, and how that other person speaks, he will imitate and do his mimicry so beautifully. And he has got such a capacity and humorous way of living is very, very thought-provoking for us. And Swamiji's life was so simple, and life is simple, truth is simple, God is simple, but due to our wrong way of thinking, we make our own life complicated. Swamiji was very kind and compassionate, and then I have got the opportunity in 1969 to go with Swamiji to Gujarat. There was one Dr. Adhuri Saab, and he wanted to start Netra Raksha Charitable Trust in 1969. And Swamiji, he insisted that Siddhanta Maharaj was abroad. I insisted only Krishnan Swamiji should come and inaugurate that Netra Raksha Charitable Trust in Veernagar. First we went to Delhi, and Chamanlal Sarmaji and family, they arranged to go to Vrindavan. When Swamiji went to Vrindavan, each and every place our Chamanlal Sarmaji used to explain the importance of that place. Swamiji became so much emotional, and then when we went to that Narmada, where that Krishna killed that Kesi, there he became so much emotional. He said, "No, I don't want to go from here, I want to sit and meditate." When we went to Vrindavan, Nidhivan, Swami also there he wanted to sit and meditate. And he said, "This place is so much beautiful and spiritual vibrations. Here, Vrindavan is nearly place of Lord Krishna,
And then Swamiji enjoyed that place. And then we went to Veernagar. There also Swami was so strict, and then he will keep up his, Swami is very punctual. Every moment for him, he will keep a small wristwatch, he will keep it in the packet, he will not wear also. He will keep that wristwatch always with his hand. Once it happened, and it is 1966, Guru Purnima day, and I was staying in Rama Kote. Swamiji said, in those days, no buildings like this. And Swamiji asked me to vacate that room, stay in the office in Ganesh Kutir Hall. And then Swamiji gave the office key, told me, I never give keys to anybody else. This I am giving to you, keep it carefully. For me, most sacred place and secure place is only sacred thread. I tied in it, and then it was on Guru Purnima day, 1966, when I went to Ganges at 3 o'clock, 3 dips, I took it, 4th dip when I want to do it, my thread was missing, then key was completely gone. Then I could not go to room, and then in those days only satsang, everything on bhajana hall. Then I could not go to the room, with wet cloth I was standing. After morning session, Swamiji came out. I went with him. He asked, why you are, it is apasakun, you are coming with the wet cloth. Go away, go away. No, Swamiji, I have lost the key. I told you, you are unfit to stay in the ashram, you go away. Then I was in tears. He said, I will give duplicate key. Go to your room, take your clothes, whatever, personal belonging, go away. Then I took the key, and then I was coming. In the meantime, Dayananda Maharaj and Hridayananda Mataji both came. I borrowed Bhagavad Gita book with Mataji. Swami, Mataji, I am going to return that book to you. Why? No, Swami asked me to go away, and I am going. No, you come here. Then Dayan Swamiji both, they took me. People are coming for Guru Purnima and annual functions. You are asking to go away from the ashram. What is the matter? No, he lost the key. No, Mataji said, what is there? And you will get the key, no problem. Then Dayam said, what is there? Krishna said, if every inmate loses the key, where is the money for 300 lakhs to bring? You have no money, you go away. Dayam said, what is there? He will give more than 45 lakhs for you, don't worry. Then Swamiji said, okay, you stay for. Then Mataji said, Gurudev is so kind. Today, Guru Purnima, don't take food. And pray to Gurudev. Gurudev will help. Next day, night, I could not sleep. Early morning, at 3 o'clock like that, I used to go to Ganges. I feel like a dream-like vision. Gurudev said, you go back to Ganges, get your key. Then I rushed there. Water level was so much subsided in the Ganges sand, white sand. I saw a small metal piece reflecting like that. Then I went and saw, and the thread was on the rock, and that key was there. Immediately I took that key and ran to Swamiji. Oh, Gurudev is with you, don't worry. Gurudev is with you, God is with you, Ganges is with you, don't go. And because of that, today I am in a position to stay here. And then Gurudev is so kind. We will have to pray to Gurudev. Normally, people say, Guru, when the body goes away, there is no Guru, we must have a living Guru. That is not true here in the Sivananda Ashram. Today we are here because of these three, Shivani Maharaj, Chidani Maharaj, and Krishna Maharaj. They are all living presence, and provided we look at them, pray to them, they are definitely help us. Because God's grace is, again and again, Gurudev used to tell, God's protecting hands are always around you. Repeat His name, surrender to Him, pray to Him. Surely He will help you in every step of life. That is Gurudev's ringing note
as devotees of Swami Shivaji Maharaj. And Krishnaji Maharaj lived in that spirit. And always, anything is there, immediately you will turn 3 times and you will do like that also in front of Samadhi Mandir. And anything that happens, immediately you will turn to Gurudev Namaskar. Every moment you feel the presence of Swami Shivaji Maharaj. That is the special character of Krishnaji Maharaj. And Shivaji Maharaj is such, and I have got the opportunity to sit with them. If you tell anything, Krishna will tell, then immediately he understands what purpose people are coming. Shivaji Maharaj, if anything person comes, he will close his eyes and see. But Gurudev is there. You see one photo of Gurudev. He will close one eye and see. Immediately he will scan the person, what they want, why they are coming, all these things. They know the human psychology so beautifully. Krishnaji Maharaj, Siddhaji Maharaj and Gurudev, they know the human mind, human psychology very well. And whatever they think, that happens here in the Sivananda Ashram. Our only duty is to pray for them. Every moment we have their guidance and spiritual guidance, even every moment of our life. Gurudev's grace is so much, and this ashram is being run, and because of his grace. Even now, sometimes our Padmanabha says, what is going to happen, nobody knows. There are 2 things here in this ashram. Swami Shivaji Maharaj wrote a beautiful story. That story I repeated many times. There are 2 things in life, doing and happening. Doing is by ego, happening is by God's grace. And that was one of the inspiring stories of Swami Shivaji Maharaj. There was a king and minister. That minister was very wise. Always he used to surrender to God. And he has got having a conviction, whatever happens is only for good. One day it happened, a farmer cultivated a mango tree, brought a very big mango fruit and offered to the king as offering to God. And king saw that fruit, oh, such a big fruit I never saw. He looked at the minister, bring a plate and knife so that I will cut the fruit with my own personal hands and share with others. When king was cutting the fruit, accidentally cut his finger. Then there was a bleeding in the finger. And king showed to the minister, see what has happened. As was his conviction of the minister, whatever happens is only for your good. Then king looked at him angrily. Then minister bandaged his finger. When everybody left, king asked the minister, what sort of person are you? When the finger was bleeding, when I felt uneasy, when I showed it to you, you say whatever happens is only for good. How it is possible? When the finger was bleeding, you said it is good. I will not believe such words. And then you must be more practical in your life. But minister said, Your Honor, you said, see what has happened. If it has happened, it should be only for good. Then king said no. Minister said yes. There's a big argument. Then king wanted to teach a very good lesson to the minister. Then he asked the minister next day to go for hunting in the forest. They tried to roam all over the forest and they could not find. And finally, the king lost the way. He went to the deeper forest. In that forest, some tribals used to live. And they got a blind belief, if offer a human body to their god, tribal god, throughout the year they will get very good animals to eat. When they saw the king alone, nobody to support him, they caught hold of him, tied him to a tree, and throughout the night they began to do some rituals. Then king was not visible, he left to his own palace. And the next day morning, and the tribal's priest came, he ordered, untie the king from the tree, make him clean, wash the body, bring the body to the altar so that we can offer his head. When these tribals untied the king in the early morning, when they want to wash the body,
they discovered a bandage in the finger. They forcibly removed the bandage, it began to bleed. When the chief priest looked at the finger, oh, without cutting it is bleeding, it is a mutilated body unfit for offering to our God. Kick him out of the forest, you should not stay in the forest. The king thought it is a blessing in disguise. He began to run out, collect his clothes, and then reach his palace. Then he narrated to the minister, oh minister, you are very, very wise. And whatever happens is good. You told it is 100% right and correct. It is my experience also. Yesterday cutting the finger, today saved my life. You are really very, very wise person. Similarly, here in this ashram, everything is nothing but happening. No one can do anything. Nobody knows what is happening next moment. And God's grace and Gurudev gives so much. Here, everything is happening. And Gurudev's grace even now, is it practicable to think in these days also, nearly 500, 600 persons to take food, and everything, rooms are free, everything is free to happening. It is nothing but Gurudev's grace. Every action is nothing but the manifestation of the divine. That was the conviction of Krishnaji Maharaj. Every act of oneself should be a conscious contemplation of the Absolute. Because Absolute is the life principle without which nothing can exist here in the universe. And that also, God first, world next, yourself last. That is also very much instructive of Gurudev. My humble request to all of devotees of Gurudev, one must follow the lifestyle of Krishnaji Maharaj and Chidananda Maharaj, so that our life also will be a spiritual life. And again, as said by Krishnaji Maharaj and Gurudev Shivaji Maharaj and Chidananda Maharaj, goal of life is God realization, not after death. While living in this body, every moment of life, you must feel the presence of the divine. And that situation they created here in the ashram. Because they lived, this very difficult to see such a beautiful place, especially one side Himalayas, another side Ganges. The moment you enter the ashram, everybody tells this is the most peaceful place. It is because Swamis, Gurudev Swami Shivaji Maharaj, Chidananda Maharaj, Krishnaji Maharaj lived in that spirit. They created such vibrations here in the ashram. It is your utmost duty, foremost duty, to feel their blessings and grace and live every moment of life. Is my humble request to all of you. Because today it is a concluding session. Once again I wanted to convey my thankfulness to all the departments, because they were hard. Nobody knows what is happening, because they are all working very sincerely, very honestly, devoted to Gurudev, especially the reception department, kitchen departments, Langar, press, Yogavedanta Forest Academy. We are bringing so many booklets, and under the personal supervision of our Padmanabhani Maharaj. I don't want to tell this name, Ram Bhaktanandji, but yet I will have to tell. He is working very sincerely, honest in the thing. And Mandir department, especially Vaikunthanji Maharaj, Kaivalji Maharaj, Krishnaji, they are all working in Mandir department, and also Ram Prem Ji of Vishwanath Mandir department, and the studio department, especially I told our Ramachandraji, he is in the center of the hall. He is recording everything and doing so much sincere service, and we are thankful to all, especially sanitary departments. They are keeping the ashram very clean, and the hospital, in spite of all these things, our Prasannatmanandji and all the Swamijis in the hospital and Sevaks, they are all doing very much from morning to evening, and also maintenance department, and also mic adjustment, all these things they are doing. I heartily thankful to all of them. Because of that, this functioning is happening. And I also thankful to all the speakers and many Pandits, Ganapaticals, Acharyas, they come by the kind invitation and also kind help of our
Nochur Venkatramanji Avargal, and also morning especially this Prabhat Beri is taken care of by Dharmanishtananji, Devabhaktananji, Sarojji, Suddha Chaitanyaji, and our Atma, Suddhatmananji Maharaj, and all other things they are doing from 18th March to 25th April. Prabhat Beri, they are doing it. They are creating such a spiritual vibrations from early morning, and also I am very much happy. Many branches from Divine Life Society, they came and then repeating Mahamantra Kirtans, and they are producing so much good vibrations, because this is only the ashram I came to know that they are repeating Mahamantra Kirtan, Akhanda Mahamantra Kirtan from 1943 onwards. By Gurudev's grace, it is continuing, and also many branches have come during this period, and they are all repeating Mahamantra Kirtans. We are thankful to all the branches of the Divine Life Society all over the world, and also many volunteers are working, not only here in the kitchen and other departments. We are thankful to all the volunteers. Because of them, everything is happening, and by God's grace, many people said everything is going peacefully because of their kind cooperation. First of all, grace of Gurudev, blessings of Chidananda Swamiji, Krishnananda Swamiji, all the functions are happening. I am very much once again thankful to Reverend Padmanabhanji Maharaj. He is working night and day for every function. Before that, he comes and organizes everything here. And then we have prayed to Gurudev. May God and worship of Gurudev bless all of them, to bless to good health, long life, peace, prosperity, to continue their noble service for many more years to come, is my heartfelt prayer. And now I will do that universal prayer. Our worshipful Chidananda Maharaj said, what you will have to do, don't forget a universal prayer. That is the guiding factor for all devotees of Gurudev. And so I repeat universal prayer on behalf of everyone. O adorable Lord of mercy and love, salutations and prostrations unto Thee, Thou art omnipresent, omnipotent and omniscient. Thou art Satchitananda, existence, consciousness, bliss absolute. Thou art the indweller of all beings. Grant us an understanding heart, equal vision, balanced mind, faith, devotion and wisdom. Grant us inner spiritual strength and grace of the Almighty be ever upon us. Good health, long life, peace and prosperity is my heartfelt prayer. Om Sarvesham Swastir Bhavatu, Sarvesham Santir Bhavatu, Sarvesham Purnam Bhavatu, Sarvesham Mangalam Bhavatu, Sarve Bhavantu Sukhinah, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pasyantu, Ma Kaschid Dukkha Bhag Bhavet, Asato Ma Sadgamaya, Tamaso Ma Jyotirgamaya, Mrityor Ma Amritangamaya. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Tonight's satsang program will be from 7:30 to 9:30 p.m. Jai Ganesh prayer, Guru Stotra, Bhagavad Gita Path, Odisha dance by Sangeeta Music School, Khurda, Bhubaneswar. Also tomorrow programs will be under the auspices of Swami Krishnananda birth celebrations, and there will be Odisha Kirtan program by Sri Radha Krishna Odissi Sankirtan Mandali, Danara, Talcher, Odisha, as per the details given below. Date 24th April 2022. Time 9:30 a.m. to 10:30 a.m. Venue Sivananda Satsang Bhavan,
All are cordially invited to attend the program. It is a very interesting program. And under the auspices of birthday of celebrations of Krishnaji Maharaj, there will be a devotional music program by Sri Karthik Raman as per the details given below. That is date 24th April 2022, time 8 p.m. to 9:30 p.m. Shivananda Satsang Bhavan Auditorium. All are cordially invited to attend the above program. Hari Om. सद्गुरु भगवान कल के जय। प्रोग्राम के बारे में स्वामी जी महाराज ने अंग्रेजी में बताया। कल सुबह 9:30 से 10:30 बजे तक शिवानंद सत्संग भवन ऑडिटोरियम में ही श्री श्री राधा कृष्ण ओडिशा संकीर्तन मंडली धनारा तेलचूर ओडिशा उनका प्रोग्राम यहाँ है। तो कल सुबह में 9:30 से 10:30 बजे तक कल प्रोग्राम रहेगा और रात को 8 से 9:30 बजे तक यहाँ डिवोशनल म्यूज़िक प्रोग्राम बाय श्री कार्तिक रमन के द्वारा डिवोशनल म्यूज़िक है। तो आप सभी को उसी वक्त भी यहाँ प्रोग्राम में आने के लिए निमंत्रण है। हरिओम तत्सत। यहाँ हमारा ये समारोह का समापन हो रहा है। हरिओम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। विश्वनाथ भगवान की जय। आंजनेय भगवान की जय। शंकराचार्य महाराज की जय। सद्गुरु स्वामी शिवानंद महाराज की जय। श्री स्वामी कृष्णानंद महाराज की जय। सब संतन की जय। सनातन धर्म की जय। सब धर्मों की जय। दिव्य राम भगवान की जय। गंगा मैया की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। Thank you all. Thank you, Swami. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण भगवान